really come up with the idea of entrepreneurs. Here we have diversity of people, diversity will be sharing their experiences, how to go for that. But what I feel, the time when I was taking education, used to have conventional thought of mind. Engineer, lawyer, chartered accountant, or management. That 4 or 5, or teachers and professors. These 5, 6 lines used to be there. And most of the time they were influenced not by choice, maybe by the parents, what they want to direct us, or what our siblings or friends. But you are living in a different era, which involve a lot of thinking, lot of innovations. You have opportunities where you can think out of the box, where you plan innovative thinkings. And that is the beauty you are blessed with. Okay. Right now we have a lady, a young entrepreneur, Shubhangi, who has really come the millets to everyone. So what I mean to say, when we talk about the entrepreneurship, when it's the startups, the very first thing is you have to think out of the box. You have to have innovative thinking. Or even if I go a step ahead, probably that's not right. When you're surrounded with such diverse persons, think weird. Once you think weird, then maybe out. Once it is thinking, that is the very first aspect. Second comes the planning, execution, facing the challenges. But yes, that is a part of life. That is the way to success. Okay. So right now I can see some very young mind, young brains. Maybe after 5 years, I will say some of the topmost entrepreneurs which have been produced. And this workshop is a stepping stone. This is the first step in the journey of entrepreneurship. So my best wishes, my blessings to journey. And again, I appreciate for the organizers for hosting such a wonderful workshop. Thank you. We have with us our IQAC coordinator, Dr. Aditya Saxena. I request Ms. Shubhangni Singh to present the token of appreciation to Dr. Aditya Saxena. Thank you. So, when the beginning of this program happened and the poster circulated for the registrations, my student asked, "Ma'am, program mein hoga kya?" Though I answered them, but I am sure this query can be more accurately answered by MSME Coordinating Officer Srimati Shakti Rani. She has served as Deputy Manager in Oneda Group. She has been awarded trophy by Chief Minister of Delhi in CII State Level Quality Circle competition. Presently, she is serving as Assistant Director with MSME DFO New Delhi. She is the Nodal Officer of State Champion Control Room and rigorously involved in the training division to promote entrepreneur among the youth. It's a pleasure to have you with ma'am. And now I request ma'am to kindly inform our students about the objectives of the program. Over to you, ma'am. Good morning. Audible? Am I audible? A very good morning to all of you, respected dignitaries on dais and the participants in the entrepreneurship organized by MSME DFO New Delhi in collaboration with Deshbandhu College. I met Mr. Gupta. It's really nice knowing him, and it was already at the active participation. This program is being organized in your college. This meant for dissemination
Ministry of MSME for both prospective and the existing entrepreneurs. The main objective of this event is to make the students aware about the initiatives taken by Ministry of MSME, Government of India, to understand the concept of entrepreneurship, to understand the Indian ecosystem of startup and entrepreneurship, to know about the policies which are introduced by the Government of India. Having said this, I would like to brief a little bit about MSME DA4 New Delhi and its functioning. There are 4 and 26 branch MSME DFOs functioning across pan-India. And the main purpose of this MSME DFOs, this development and facilitation office, promote and support the SME sector of a country. MSME DFO New Delhi was formerly known as Small Industry Service Institute. This was established in the year 1954. Districts of Delhi under jurisdiction, as well as Noida, Ghaziabad, and Ahmedabad, and Hapur. So jurisdiction extends till Delhi as well as NCR districts, right? So over the years, the institute has provided consultancy to various MSMEs on projects and areas of investment, information for selection of products, suitable plant and machinery, manufacturing process, production. Ministry of MSME also programs skill development, technology upgradation, market development, NMCP schemes, IPR, PMS procurement, marketing support, vendor development program, etc. The main objective of today's entrepreneurship awareness in and motivate the youth to become job seekers. By NSIC. NSIC is an enormous body of. So Mr. Chetan Sharma is here with us. So he'll be talking about the NSIC. And we have a motivational speaker. Gaurav Kumar Agarwal, AGM SBI Delhi. These are questions. Thank you once again, all. Thank you, ma'am. Moving ahead for what we have gathered today. To begin with our talk series, we have with us Dr. K.K. Goyal. His journey is itself inspiring. After failing in entrepreneurial venture, he cleared UPSC and joined Ministry of SSI and ARI. After dedicating 30 years, he retired as Class 1 officer from Ministry of MSME, Government of India in May 2022. He has organized more than 800 training sessions for promotion of entrepreneurship. Also, he has authored 3 books, first on entrepreneurship, second on women entrepreneurs, and third on leadership skills and team building. Presently, he is holding national level position of director in All India Forum of MSME. He is running his own management consultancy firm as Royal Gyan. Having total experience of 35 years, he is still on the mission to support budding and struggling entrepreneurs. It's exclusively our pleasure to have with us Dr. K.K. Goyal, sir. Sir, I would now request to enlighten the students about the schemes of MSME.
Thank you, ma'am, and thanks everybody on the dais, up the dais, and thank you, ma'am, especially for giving such a wonderful introduction. I was impressed with myself. Okay, so actually, you see, my sister and my earlier colleague, Mr. Sakti Rani, has given a statement that it has to be an interactive session. Okay, and so far I have not seen that interaction. So, do you want to make it interactive? Still, many of the persons have not applied. Do you really want to make it an interactive? Okay. So who will like to answer this? Why? Raise your hand. Whoever wants it, everybody wants it, nah? Why do you want? Anybody who can raise the hand? Who will like to answer? You see. So, yes. What's your name? उत्कर्ष. सब लोग उत्कर्ष के नाम पे एक बार ताली मारें. आप लोग जिस प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं, I am deliberately using this language so that we can communicate easily. चूंकि ये कहा कि आंसर कौन देगा, ठीक है ना, हु विल आंसर, तो बहुत से लोगों ने कहा यार इंग्लिश में कौन जवाब देगा, कहीं कोई गलती हो जाएगी. ठीक, आजकल मैंने देखा जो मैसेजेस वगैरह भी जो देते हैं ना, मिक्स्ड लैंग्वेज में देते हैं, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. कैन इज सी एन, ओके इज के, आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन बट एनीवे. सो हु एल्स विल लाइक टू आंसर? कौन और आंसर देना चाहेगा? उत्कर्ष ने इंटरप्रेन्योर का फर्स्ट टेस्ट पास कर दिया, टेकिंग रिस्क. समझ नहीं आ रही बेटा? दोनों लोग. अच्छा. सो बोर्ड क्लियर. सो उत्कर्ष ने एक टेस्ट उस पर टेकिंग इनिशिएटिव, टेकिंग रिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. हो सकता है कि सही बताते, गलत बताते, चाहे जो भी बताते, लेकिन बताते तो सही. और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ सही या गलत हो सकता है क्या? एक Why do you want to take initiative in this? ये क्वेश्चन इनिशिएटिव. प्लीज बी अटेंटिव. ठीक है ना, मुश्किल स्टेज पे अटेंशन. to give us 2 hours time. मैडम 2 घंटे का टाइम आपको देना है. 2 घंटे मतलब 100 120 100 minutes. Anybody who can quickly answer? 10 seconds. 10 seconds. Very good. और कोई आंसर देना चाहेगा? देशबंधु का ये आंसर मैं मान लूं. देशबंधु की इज्जत दांव पे. मैंने कहा 100 मिनट का अटेंशन देना, 100 मिनट्स का. कितने सेकंड्स हुआ? थैंक यू. थैंक यू. ठीक है ना. तो 6000, लेकिन कम से कम इतना अटेंशन जरूर रखो बेटे. आई एम शेयरिंग यू वन थिंग. आई एम एन IITian एंड आई विल टेल यू, जब गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग का was person in the first batch to attend it in IIT KGP, क्योंकि IIT शुरू किया गया था 1986. been a member of CBSE, जिसमें CBSE किया गया था, तो I was a member of. But please be attentive on this. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ये ना मिले. Do you are interested in this? Not interested in this, then probably मेरी जिसको इंटरेस्ट पास में. और इंटरेक्टिव जो मैडम का कहना है, हमारे जो सेशंस होंगे, जैसे बैंक के ऊपर में सेशंस होंगे, ऐसी किसकी नहीं होंगे, तो वहां पे आपको दिस इज व्हाट. एंड स्टूडेंट, यू हैव ऑल द राइट. Participant of this program, you have all the right.
ऐसा कोई ये क्या है, किसी का भी चीज मैडम इंटरेक्टिव करना बहुत God, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप लोग को जितनी बातें कही सबसे से यस और नो। अच्छा, तो एक वर्ड आया एमएसएमई, आया ना? व्हाट इज एमएसएमई? आई शाबाश, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, एमएसएमई सर। MSME is micro small and medium enterprises. What is micro small? Is MSME. Any answer? What is known as micro enterprise? कौन आंसर देना चाहेगा? वेरी गुड, तालियां नहीं बजो बात। कौन आंसर देना चाहेगा? सही है। माइक्रो है बेटा 5 करोड़, ठीक। कितना? नाउ अभी आप लोग लिखने उखने का काम छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। गूगल चीजें बोल रहे सारी की सारी गूगल वाले कहीं कोई बाइक सेशन में जाएगी तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसको नोट करना, कर लो www.dcmsme.in। मैडम मैं वहां जाऊं क्या? फोटो अच्छी है ना? हाँ ठीक, मैं समझ गया। इनको स्पीकर के तौर पे भी फोटो चाहिए ना, वो वाली बात। हाँ तो ठीक है बेटा, समझ में आया। www.dcmsme.gov.in। डीसी मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, gov.in मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो www.dcmsme.gov.in। मैडम मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊं, चलेगा? ठीक है ना? वो जैसे शादी में स्टेज पे नहीं बिठा देते दूल्हा दुल्हन को, ऐसे स्पीकर को डेस्क पे खड़ा, इस पे पोडियम पे खड़ा करना चाहते हैं प्रॉबेबली। एनीवे क्लियर। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इतनी जानकारी मिलेगी जो एक एनसाइक्लोपीडिया के समान है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जिसको बेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट का अवार्ड मिला हुआ है। इस पे बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो जब कभी भी आपको कोई भी चीज जाननी हो, जितनी चीजें मैं बोलूंगा इसमें और साथ में दूसरे लोग भी जो बोलने वाले हैं, ज्यादातर चीजें इस पे आपको मिल जाएगी, ठीक। एक साइट और नोट कर लीजिए, www.champions एस लगाना है उसमें, ठीक है, .gov.in, champions.gov.in। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो जाए जो आपके समझ में नहीं आ रहा, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड, दूसरी किसी चीज से रिलेटेड, स्कीम के बारे में, दूसरी किसी चीज के बारे में, आप इस पे लिख के डाल दीजिए, 48 घंटे के अंदर में आपके पास जवाब आ जाएगा। कितनी देर में? अच्छी इंफॉर्मेशन है या नहीं है? अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली कभी भी रात में बैठ के 1 बजे करना है, प्लस सामने वाले को तो मुझे टाइम दे दिया, 48 घंटे के अंदर रात को 1 बजे तक उसको आंसर देना है। मोस्टली इसके 95% जो क्वेरीज हैं वो 2-3 घंटे के अंदर में रिजॉल्व हो जाए, अगर डे टाइम वर्किंग आवर्स हो, ठीक है। अगर आपने 10 to 5 के बीच में कोई क्वेरी डाली है तो 2 घंटे के अंदर में क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। इससे बढ़िया एफिशिएंसी और क्या चाहिए? अच्छी इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? तो मेरे नाम पे एक बार सब लोग ताली मार दो यार, कम से कम, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट इज इंटरेक्टिव, नाउ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व। इसके सिवा आपको बहुत सारी चीजें नोट करने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना। हम लोग कहाँ थे? एमएसएमई क्या चीज, राइट। एमएसएमई में से 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 माइक्रो इंटरप्राइज, सेकंड, थर्ड मीडियम। कुछ साल पहले तक, ठीक है ना, मतलब मैं बताऊं 1 जुलाई 2020, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स पहले तक ये 6 ऑर्गेनाइजेशन थी, 6। कितने? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो इंटरप्राइजेस सर्विसेज, स्मॉल इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंटरप्राइजेस मीडियम। बहुत कम जवाब आ रहा है इस पे, तो ऐसी आवाज आनी चाहिए कि यहाँ गोल हो जाए, घूम जाए पूरी आवाज। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम सर्विस।
पहले 6 थी, इसको मर्ज करके मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम सर्विसेज को डिफरेंस जो था अलग कर दिया गया। अब सिर्फ 3 है, माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो डिफरेंस था वो खत्म कर दिया गया। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हम लोग, एक है ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो इंटरप्राइज। दो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए इसको डिफाइन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो मैडम बोल रही थी, क्लियर। सेकंड क्राइटेरिया, टर्नओवर कितना है। टर्नओवर यू नो क्या होता है टर्नओवर? टोटल रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू। अरे भाई यार, बहुत इंटेलिजेंट। मैं तो सोचता था नहीं बता पाया। अरे बेटा, आपने मुझे फेल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो 2 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। क्राइटेरिया नंबर 2, टर्नओवर। ठीक है। अब जो टर्नओवर है, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका 5 टाइम्स है। मान लो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, टर्नओवर कितना होगा? 500 रुपए का, 500 का। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इंटरेस्ट आ रहा है? ठीक। तो अब मैं क्राइटेरिया बताता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, माइक्रो के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर कितना हुआ? 5 करोड़। स्मॉल 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर कितना हुआ? और मीडियम के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर कितना हुआ? नाउ यू थिंक ऑफ इट, एक बार के लिए सोच देखो। हम लोग बोलते हैं तो बड़ी आसानी से 250 करोड़, क्या फर्क पड़ता है यार, मामूली सी चीज है। इंडिया की पॉपुलेशन से कितना टाइम, बहुत कम। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कि हो सकता है आने वाले 5-7-10 साल में हम लोग 250 करोड़ भी हो जाए। 140 CR तो है अभी, तो हो जाएंगे। तो हमें करोड़ कोई खास बड़ी बड़ी फिगर नहीं लगती। लेकिन उन कंट्रीज को सोचो जिनके 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की पॉपुलेशन, करोड़ कितनी बड़ी बात है उनके लिए। करेक्ट? तो आप सोच के देखो कि करोड़ अगर आपको लगाने हो जाए तो कितने हो जाए। आप लोगों से कितने लोग अगर अपना खुद का काम करना चाहें तो मीडियम इंटरप्राइज लगाएंगे? माइक्रो से स्टार्ट करें। वेरी गुड यार, गुड गुड स्टार्ट। ठीक है ना, हम लोग माइक्रो से स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कि माइक्रो तक पे ही रह जाएं। बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है स्मॉल पे चले। मीडियम की सोच सकते हो क्या? एट दिस स्टेज बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मीडियम पे पहुंचते हैं लोग। In my experience of 30 years in this ministry, I have seen many of the persons graduating from micro to medium and even medium to large. क्योंकि ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। ठीक है ना, वेरी डिफिकल्ट टू गेस। क्लियर? आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, सिर्फ क्विकली आंसर देना, सबको आंसर देना है। ठीक है ना, कोई भी चुप ना रहे प्लीज। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसके लिए कौन सी लिमिट है, और ध्यान से सुनो, उसके बाद सब लोग आंसर देंगे। जब मैं बोलूंगा तभी आंसर देना, पहले आंसर नहीं देना। करेक्ट? स्मॉल इंटरप्राइज के बारे में पूछूंगा, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का तो कोई फर्क रहा ही नहीं, कोई फर्क नहीं रहा। स्मॉल के बारे में पूछूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आंसर देना है। टर्नओवर कितना है, आंसर। बहुत से लोगों ने जवाब नहीं दिया, अब जवाब देंगे ना। मीडियम का इन्वेस्टमेंट इन, एक मिनट, क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये डायनेमिक ओटीपी है, ठीक है। यू हैव टू टेल द ओटीपी एंड यू हैव द टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। क्लियर? स्मॉल का टर्नओवर, माइक्रो का टर्नओवर। वेरी गुड यार, सब लोग एक्सपर्ट हो गए। मैडम आप सही माने मेरी जो, कोई बात नहीं, चलेगा। गलत हो सही तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एग्जाम थोड़ी है, तो थोड़ी पता चलना है, पता चलना है। लेकिन अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें कुछ और बारीकियां हैं, जैसे टर्नओवर जो होता है, अगर एक्सपोर्ट्स किया हुआ तो उसका टर्नओवर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए हैं, कॉस्ट एक्सक्लूडेड। पावर जनरेटर के लिए जनरेटर लगाया हुआ है, कॉस्ट एक्सक्लूडेड। सो दे आर सर्टेन फाइनल पॉइंट जो आप गजट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे या एक गूगल बाबा से पूछेंगे या हमारी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। करेक्ट? यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब कोई आपसे पूछे एमएसएमई क्या है, तो आपको ये करने की जरूरत है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। आप कंप्लीट चीज बताओगे कि मीडियम का टर्नओवर कितना है, 250 करोड़। वेरी गुड। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट ऑन दिस? ठीक। अच्छा, एक और वर्ड आया था बेटे, स्टार्टअप आया था ना, कुछ कुछ लोगों ने वर्ड यूज किया था, स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? व्हाट इज दैट स्टार्टअप? ये माउस इसी से है ना बेटे,
नहीं माउस भी है ना, हाँ तो मैं माउस से मैनेज कर लूंगा। हाँ बोलो, स्टार्टअप क्या होता है? जल्दी यार, क्या 2-3 लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? और लोग नहीं बोलेंगे? पीछे वाले इधर से कोई बोलो, व्हाट इज स्टार्टअप? अपने आइडियाज, हाँ आगे, व्हाट नेक्स्ट, कैरी ऑन। अपने आइडियाज को स्टार्ट करना, दूसरे का आइडिया स्टार्ट नहीं करना है हमें, ठीक है? ठीक, हाँ बताओ। बिजनेस को पहले 5 साल तक के लिए स्टार्टअप ही बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, ये कुछ एमएसएमई की डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल है, कोई खास जरूरत नहीं आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, बोलते रहो। स्टार्टअप क्या है बताओ, आप लोग के जो दिमाग में आता हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कोई भी नया बिजनेस खोलना स्टार्टअप हो गया, ठीक? और कुछ? ये देखो, ये डेफिनेशन जो मैंने बताई थी ये आ गई, ठीक है? इसको दूसरे तरीके से देखना है, ऐसे देख लीजिए, क्लियर है? एनी डाउट ऑन दिस? 1 मिनट के लिए सब लोग देख लें, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, जो मैंने बताई वो वाली बात ही है। तो बेटा पानी दे पाओगे? क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स को? ठीक है ना? अब मेरा क्वेश्चन है, स्टार्टअप क्या है? ठीक, ये चीज है ना, व्हाट इज स्टार्टअप? कहना है शुरू के 5 साल तक कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कहता है, उसके बाद में जैसे 5 साल से बड़ा हुआ, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया, एमएसए बन गया वो, ठीक? जैसे बच्चे का होता है ना, छोटा बच्चा है, 3 साल तक कहीं नहीं भेजना, उसके बाद में भेज दिया तो क्या, प्ले स्कूल में जाना शुरू कर दिया, उसके बाद 5 साल का हुआ तो एलकेजी में भेज दिया, और स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो गया, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक दैट, नो, ठीक? ऐसा नहीं है। और कोई स्टार्टअप का बताओ कि स्टार्टअप क्या चीज हो सकती है? क्विक, जल्दी से, कोई देश बंधु में सब बेकार। मैडम यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। आपके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है ना? आप लोग कौन से कोर्स में हैं? बीकॉम ऑनर्स? खाली बीकॉम भी नहीं, माय गॉड, लाइफ साइंस भी है। चलो लाइफ साइंस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? लेकिन चलो बीकॉम ऑनर्स वालों की तो मजा नहीं आया। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर चलेगा, कोई बात नहीं, अभी तो कॉलेज नया नया शुरू किया, अभी तो कॉलेज, पहले तो कॉलेज से तो परिचित हो, कैंटीन कहाँ है, कौन सी जगह है। हाँ 3 इयर्स, मैडम आपका 2nd ईयर 3rd ईयर बेकार है, ठीक है ना? आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो भाई, प्लीज, ठीक है? देखो मेरी तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा तो बेवकूफ आदमी कुछ भी बोल के चलाएगा, लेकिन दूसरा कोई रिक्रूटर आएगा ना, वो सही माने अनइम्प्रेस्ड होके जाएगा, ठीक है? चलो व्हाट इज स्टार्टअप, कोई भी बताए, जो समझ में आता है बोलो ना। ठीक है, लाइफ साइंस का कहना ये है, लाइफ साइंस है ना बेटा आपकी, लाइफ साइंस का कहना अपने आइडिया से कोई भी बिजनेस शुरू करना स्टार्टअप है। It is an initiative taken by an entrepreneur to start a business. 2 4 10 स्लाइडें और बढ़ा दो, ठीक है ना? कॉपी भर दो, जांचने वाला कुछ नंबर तो देगा ही, 0 तो देगा नहीं, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो जैसे एमएसएमई को एक डिफाइन किया गया ना बेटा, मैंने बताया ना, जो मैंने एमएसएमई की जो डेफिनेशन बताई, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखी है। इसी टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन बनाई हुई स्टार्टअप की। जानना चाहोगे आप लोग क्या है? हालांकि वो हमारा फील्ड नहीं है, हम लोग एमएसएमई इसके ऊपर में बात करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आजकल के जमाने में हमें स्टार्टअप को भी जानना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत अच्छी चीज, ठीक है? तो स्टार्टअप क्या चीज होती है ये आप देखो इस पर। सब लोग एक बार पढ़े इस पे। लिखने की जरूरत नहीं, लिखने से ज्यादा पढ़ो बेटा उसको, ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ होगा तो मैं PPT छोड़ जाऊंगा, ठीक है ना? अगर आपको किसी को चाहिए तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज दे दोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है ना? रात 9 बजे देख लेना आराम से, जब फुर्सत हो जाए तो। ओके, क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? तो स्टार्टअप के लिए ये वाली कंडीशन होनी जरूरी है, कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई है, ठीक है ना? आ गई है ना? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? तुम्हें भी पता, और तुम लाइफ साइंस नहीं है कम से कम, उसका एल से लाइफ साइंस नहीं है, ठीक है ना? हाँ बेटे बताओ जरा, एलएलपी क्या है, बता तो मुझे लिया। से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जिसमें जिसमें हाँ, टू देखो, टू जिसमें पार्ट प्रोफेसर बनेगा पक्का, है ना? एक
प्रोफेसर आप क्या पक्का खड़े होकर बेटा जवाब दे दो, वेरी अच्छा लग रहा है। सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए एंड अप टू 50 पीपल। दो से कम नहीं, मतलब एक चलेगा, इक्यावनवां आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 2 आदमी कम से कम होने चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो, चेंज करो, कोई बात नहीं, इनको पूरा लगा। एक्चुअली खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक्चुअली सर इसमें हमारी एक लाइबिलिटी होती है, हाँ, वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती very good, देखा कितना बढ़िया जवाब दिया, सही है क्या? बोलो, बोलो, बोलो। यस सर सही होगा। सही होगा यार, वो बोल रहा है सीनियर है क्या तुम्हारा, तो फिर क्यों मान रहे हो उसकी बात को? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी वो, तो फिर क्यों मानोगे उसकी बात को? कमाल है यार, अगर वो गलत बात कह रहा है, भाई 2 ही आदमी की बात मानता है आदमी, या तो कोई सीनियर हो, नहीं तो बाद में रह गई होगी डाले आप तो खैर जमाने नहीं, या फिर गर्लफ्रेंड हो, कहीं बोलो तो बुरा मान जाए, फिर मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी, दूसरी को भी कह देगी यार इसको मत करना है, बात नहीं मानता है, वो बात गड़बड़ है ना थोड़ी सी, तो यार ये बात तो सही नहीं है भाई। एक का कहना है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, एक का कहना है लिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों चीजें कैसे हो सकती है एक साथ? हो सकती है क्या? है सर लिमिटेड होती है कह रहे, अरे भाई सर लिमिटेड है, सर अनलिमिटेड है। हाँ अच्छा, वो कह रहे देखो, उनका मतलब वो कहते हैं लिमिटेड होती है, मतलब क्या? उनको सिर्फ एक बात सुनाई नहीं, लाइबिलिटी नहीं, उसको गर्लफ्रेंड सुनाई दी, तो लिमिटेड गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है कि नहीं? उनको एक चीज समझ में आई, लिमिटेड गर्लफ्रेंड होती है, अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? और ये कैसे हो सकती है एक की तो अनलिमिटेड हो और बाकी सबकी कुछ लिमिटेड हो? जब एक को हक है तो सबको होना चाहिए, यही है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी का वर्ड ही लिमिटेड है, असल में क्या होता है, पार्टनरशिप 2 टाइप की। अब सीरियसली सुनिए ना, पार्टनरशिप 2 टाइप की होती है, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको एलएलपी बोलते हैं। जब पार्टनरशिप होती है, मान लीजिए मैंने और इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू की, पार्टनरशिप के जनरल मीनिंग पे चलते हैं हम लोग, टेक्निकल मीनिंग पे नहीं जाते। इन्होंने और हमने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू की। इन्होंने कहा सर मैं 10% लगाऊंगा, मैंने कहा मैं 90% लगाऊंगा, मेरे पास रिटायरमेंट के बहुत पैसे मिले हुए हैं। इन्होंने कहा सर मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती, कमाई का कहाँ से जुगाड़ है, बापू के ढाबे में मुझे कुछ मिलता नहीं, जो पॉकेट में नहीं मिलती, उसके हिसाब से 10% लगाऊंगा, ठीक है। तो अब इनकी लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कल को लॉस होता है तो इनकी लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? इन्होंने 10% लगाया, मैंने 90% लगाया, तो इनकी लाइबिलिटी 10% की होनी चाहिए, मेरी 90% की होनी चाहिए। अगर जनरल पार्टनरशिप है तो ये कंडीशन नहीं है, समझ लें सब लोग, ठीक। अगर जनरल पार्टनरशिप है तो उसकी लाइबिलिटी 100% की मेरी है और 100% इनकी है। जो पर्सनल एसेट्स हैं इनके, वो 100% इनके रिकवर किए जा सकते हैं, 100% मेरे रिकवर किए जा सकते, जब तक लास्ट बैकअप नहीं होता। मैं ये नहीं कर सकता कि भाई मैं तो सिर्फ 90% दूंगा, 10% उससे जाकर वसूलो लाइफ साइंस से, और लाइफ साइंस से कहे मेरे पास। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? मुझसे कहा जाएगा सर आपको 100% देना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम, आप चाहे उससे लेकर दो, चाहे अपने आप दो, चाहे किसी से लेकर दो। ऐसे ही इनसे कहा जाए, ये कहे कि सर मैं तो 10% दूंगा और मैं चला गया ऊपर, ठीक, मैं चला गया ऊपर, और ये कहे सर मेरी तो सिर्फ 10% लगे थे, तो मुझे इससे मतलब नहीं, या तो ले सकते हो ऊपर से जाके ले आओ, दे दो, नहीं 100% आपके जो। ये है पार्टनरशिप। मेरी बात क्लियर हो गई? अब इसमें बहुत खतरा रहता है, क्योंकि ये बहुत सही माने में रिस्ट्रिक्शन, ये हम और दोनों क्यों मिलेंगे हम लोग, मुश्किल है ना। ये कहेंगे यार जब मेरी पूरी जिम्मेदारी है तो मैं क्यों मिलूं सर, ठीक, क्लियर है? इसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया था इंडिया में एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर हो रही बेटा बात? उसमें यह है कि अगर इन्होंने 10% दिया तो इनकी जिम्मेदारी 10% की है, मैंने 90% दिया तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ 90% की, ठीक बेटा, क्लियर हो गई? ये नहीं है कि मेरी यार 90% दिया तो मेरा गला ही दबा दोगे यार कि अनलिमिटेड है सर आपकी, तो आपको क्लियर हो गई बेटा बात? ऐसा नहीं होता कि एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बाकी सबकी लिमिटेड, ऐसा नहीं है, सबकी लिमिटेड है, और उसका एक बकायदा ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया जाता है, किसके किसके कितनी लाइबिलिटी होगी, जितनी बनाई जाती है उतने तक ही उसकी लिमिटेड होती है, ठीक है। अब ये बात आ गई। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा कॉमर्स वालों से, ये सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गए ना, फॉर्म के जितने फॉर्म्स हो सकते हैं, जितने टाइप के हो सकते हैं, सब आ गए या नहीं? पब्लिक लिमिटेड छूट गई, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड स्टार्टअप हो नहीं सकती, क्लियर है? हाँ, और कोई छूट गई क्या? ओपीसी भी छूट गई, वेरी गुड। ओपीसी भी असल में देखो डेफिनेशन में ये चीज नहीं लिखी हुई है, मैंने बताया था ना आपको कि एमएसएमई वाली जो वेबसाइट है ये हमेशा अप टू डेट होती है, लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वो अप टू डेट नहीं है। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे भाई मेरी बात को, नहीं तो मेरी पेंशन रुक जाएगी, कहेंगे गवर्नमेंट के बारे में ऐसा बोल गया हो, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, ओपीसी है, एलिजिबल है, लेकिन इस पे डेफिनेशन पे नहीं लिखा हुआ अभी तक, क्लियर? हाँ, और कोई फॉर्म छूट गया? सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, अगर बाकी दूसरी कंडीशंस को मीट करती है
तो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। और बोलो, और कोई? सबसे पहली चीज कौन सी फर्म बनाता है? मान लो कि वो वाली मिसिंग है कि नहीं है इसमें, ये पता नहीं क्यों, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो स्टार्टअप नहीं हो सकती। क्लियर? कंडीशन है बेटा, ये डाला हुआ कंडीशन। गवर्नमेंट जब कोई कंडीशन डाल देती तो हम उसको वायलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फैक्ट देखते कि क्या है। तो इसकी कंडीशन है, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप लगाते हो तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो नहीं चलेगी। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कंसीडर, सॉरी ये तो सेम आ गया ना। टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन 100 करोड़। मतलब जितनी एमएसएमई है, एमएसएमई में कितनी लिमिट है? अपर लिमिट क्या है? 250 करोड़। तो इसका मतलब है कि जो एमएसएमई 100 करोड़ से ऊपर चली गई वो स्टार्टअप तो हो ही नहीं सकती। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या है? एनी ऑफ द प्रीवियस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली भी है। तो जो हम लोग बोलते थे ना कि कोई शुरू करेगा तो स्टार्टअप है, नहीं। बात समझ में आ गई? मतलब पुरानी कंपनी है कोई, पुरानी कोई फर्म है, वो भी स्टार्टअप हो सकती है बशर्ते कि वो और कंडीशंस को मीट कर रही हो। मेरी बात समझ में आ गई ना? इसके लिए स्टार्टअप के लिए नया होना जरूरी है। 99% लोग आगे सोचते हैं स्टार्टअप का मतलब नया बिजनेस। ठीक है ना? लेकिन ये नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है ना प्रीवियस। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछेगा बीच में। किसी को भी नहीं समझ आया, ऐसा नहीं कि एलएलपी के बारे में हम लोग फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके? हाँ बोलिए, समझ में आ गया ये? इसका मतलब है कि उसकी लाइफ 10 साल की है। मान लीजिए 3 साल पुरानी फर्म है, तो आने वाले 7 साल तक के लिए वो वैलिड होगी स्टार्टअप के तौर पे। स्टार्टअप के जो बेनिफिट्स उसको मिलने वाले होंगे वो बचे हुए 7 साल और मिलेंगे। मान लो 7 साल पुरानी कंपनी है तो कितने साल और मिलेंगे? 3 साल और मिलेंगे। ठीक है ना? और कोई आज शुरू हो रही है तो 10 साल तक चलेगी। ये है इसकी मीनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज। समझ में आ गया? मतलब इनोवेटिव होना चाहिए कोई, उसका या तो रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए उससे, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह होनी चाहिए, ये सब चीजें हो। और एक छोटी सी कंडीशन एक और लगाई हुई है इसके साथ में, ये वाली, कि बड़ी कंपनी को काट के छोटी ना करके उसके हिसाब से ना दिखाए। मान लो किसी का टर्नओवर 300 करोड़ है, उसने एक छोटी सी कंपनी बीच में बना दी कि भैया इसका तो 50 करोड़ टर्नओवर है, खाली ये वाली कंपनी चलेगी, इसको स्टार्टअप दे दो, ऐसा नहीं हो। ठीक है? ये क्लियर हो गई बेटा बात? हाँ, क्या चीज? ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो एक बार, पढ़ो इसको। एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सॉरी बेटा, बैक करना जरा प्लीज। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? मतलब कोई बड़ी कंपनी है, क्योंकि उसमें कंडीशन है ना 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी का मान लो 200 करोड़ का टर्नओवर है, उसने कहा इसमें से एक छोटी कंपनी निकाल देता हूँ, 5 करोड़ का बना देता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना देता हूँ और उसी काम को करता रहूंगा, तो वो वाली चीज नहीं चलेगी। ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट? एनी डाउट ऑन दिस? अब एमएसएमई और स्टार्टअप का फर्क समझ में आ गया आपको? है? अब मैं एक चीज पूछता हूँ, कोई फर्म है एक जो एमएसएमई है, ठीक? क्लियर? क्या वो स्टार्टअप है? बहुत बढ़िया। और अगर कोई स्टार्टअप है तो एमएसएमई है, ठीक? क्या हम कह सकते हैं कि सारे स्टार्टअप एमएसएमई हैं? नो, नो, यस, नो, यस। सारे के सारे स्टार्टअप एमएसएमई हैं? देखो अब ग्राफ देखो, आप ग्राफ से आप लोग समझने की कोशिश करो। व्हाट डज इट से? सारे के सारे नहीं है, कुछ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, गलती से नहीं निकला हुआ है, जानबूझ के निकाला है मैंने उसको बाहर। नहीं, 5 करोड़ से नीचे, एक मिनट, अपना दिमाग मत लगाओ दोस्त, उल्टा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक? मैंने कहा क्या 5 करोड़ से नीचे होगा तो स्टार्टअप नहीं होगा? कहा क्या? स्टार्टअप के लिए टर्नओवर कितना चाहिए?
0 से लेके 100 करोड़, ठीक, क्लियर कट है। और एमएसएमई के लिए 0 से लेके 250 करोड़ तक। तो इसलिए सारी की सारी जो एमएसएमई है जो 200 करोड़ से ऊपर वाली हो तो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो कंडीशन तो नहीं, कौन सा ऐसा स्टार्टअप होगा, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बेटा तुम सही में स्टीव जॉब का रूप बनोगे, ठीक है, पक्का बता रहा हूँ, इसने सही बताया, प्लस इसमें ज्यादा लगा रखी हो क्या, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टार्टअप की डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट की कहीं कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एमएसएमई में है। मान लो उसने 50 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी लगाई हुई है तो एमएसएमई नहीं रहेगा, वो एमएसएमई से बाहर, लेकिन वो स्टार्टअप में अंदर है, ठीक है ना। 50 करोड़ से ज्यादा लगाई हुई है और मान लो उसका 90 करोड़ का टर्नओवर है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो सारी कंडीशन मीट करा तो स्टार्टअप तो रहेगा लेकिन एमएसएमई नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। इस जनरेशन को समझाना बहुत मुश्किल है दोस्त, इतनी देर का टेंशन आपका रहा या नहीं रहा, 90% टाइम का टेंशन था या नहीं था, मोबाइल पे अभी भी ध्यान है उनका, देखो बेटा थोड़ी देर बात कर देना चैट, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, देखो मेरा माउस लूट गया भाई, हद है यार, नहीं लेके जा रहा था बेटा, यही छोड़ के जाता था। चलो क्लियर, एनी डाउट ऑन दिस? आई होप पॉइंट्स ऑफ एमएसएमई एंड स्टार्टअप आर क्लियर। स्टार्टअप किसको कहते हैं, ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट, देखो अब हम लोग कहाँ कहाँ कंफ्यूज थे उसको बताऊं, एमएसएमई को तो हमने क्लियर कर दिया, स्टार्टअप में कहाँ कहाँ कंफ्यूजन था, हम लोग कहते थे नया आइडिया होना चाहिए, ठीक, कोई जरूरी नहीं पुराना आइडिया है पहले चालू की हुई है, तो किसी ने कहा 5 साल तक की उसकी लाइफ है, गलत, लाइफ कितनी है, 10 साल तक की, ठीक है ना। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकती है या नहीं, नहीं, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, अब हमको मुझे जो लगता है एमएसएमई और स्टार्टअप अब आपको क्लियर हो गया। बेटा मेरी एक सजेशन दूं आप लोग को, क्या होता है कि इंटरनेट पे गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको जो साइटें बताई इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसपे अपने तरफ से इंटरप्रेट मत करना, जो लिखा हुआ है जो चीजें है उसी फैक्ट को लेकर चलना, अपने तरफ से दिमाग मत लगाओ, फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाए तो उसको एक क्वेश्चन तौर पे पूछो और लोगों के हिसाब से देख लो, क्लियर। कई बार क्या होता है हम लोग अपने हिसाब से सब कुछ सोचते हैं, जैसे इन्होंने फिर भी सोच लिया बोला 5 से नीचे होना चाहिए या 5 लाख से नीचे होना चाहिए, ऐसा अपने दिमाग से नहीं सोचा, ठीक है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो हमारे अपने आप को लगने लगता है, फिर बाद में कभी कभी होता है कि नहीं उसमें तो कुछ और लिखा था यहाँ कुछ और। आई होप माई पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, एनी डाउट ऑन दिस? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब किसी का कोई क्वेश्चन है या एमएसएमई स्टार्टअप क्लियर हो गया? अब जो है यहाँ पे जैसे मैडम ने बताया था, एमएसएमई को फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल पास में मोदी मिल के पास में हमारा एक ऑफिस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारियां देता है, जिसमें मैडम भी बैठती है और वो ट्रेनिंग डिवीजन की हेड है, ठीक है ना। मैं वहीं से रिटायर हुआ हूँ, कभी भी अगर आपको पूछना हो जाए तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं, टेलीफोन पे पूछ सकते हैं, नहीं तो 48 घंटे के अंदर कौन जवाब देगा, वेबसाइट दे दिया आपको, 48 घंटे के अंदर में आपको उस पर जवाब मिल जाएगा, ठीक, टेलीफोन पर करके भी पूछ सकते हैं, कभी जाके पूछ सकते हैं, इन सब चीजों के हिसाब से हो गया। किसी का और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि टाइम बहुत कम है, दूसरे स्पीकर्स भी हैं। जब हम कोई भी एमएसएमई स्टार्टअप करते हैं तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इन्वेस्टमेंट, 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 ठीक है ना। आपको दिया 100 करोड़ रुपया दिया, जाओ, आइडिया चाहिए, ठीक, 100 करोड़ रुपए काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि 100 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अग्रवाल साहब आए हुए हैं, बोला सर दे दीजिए, उन्होंने कहा चलो देश बंधु के नाम पे दिया, ठीक है अग्रवाल साहब दे देंगे ना 100 करोड़ रुपए, दे देंगे वो, ठीक है, बहुत जनरस, आपका काम शुरू हो गया, वो कहेंगे भैया अगले महीने इसका 80 लाख रुपए की ईएमआई भर दो, 90 लाख रुपए की ईएमआई भर दो, भर दोगे? हाँ, करेंगे क्या? तो इसलिए, लेकिन किसी ने तो नहीं कहा, सब लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट, 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 ठीक है ना, करेंगे क्या, ऐश करेंगे और क्या है ना, है घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, 100 करोड़ में तो बहुत ऐश हो सकती है, घूमते रहेंगे पीछे पीछे अग्रवाल साहब, नहीं तो है ही लंदन में जाके बैठ जाएंगे, कोई हमारा बैठा हुआ पहले से भाई कहेंगे भाई छोटा भाई हूँ आपका, बिठा लो, छोटी बहनों बिठा लो मुझे भी बगल में कहीं ना कहीं, बोला कितना लाया, बोला 100 करोड़, बोला मैं तो हजारों करोड़ लाया था, ठीक है ना, ठीक, क्लियर, आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो हमें सबसे पहले आइडिया चाहिए, आइडिया से भी पहले एक चीज होती है, वो है बेटा माइंडसेट, मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, क्योंकि खुद के बिजनेस में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए
सबसे पहले माइंडसेट, और माइंडसेट को जनरेट करने के लिए ये प्रोग्राम, सो दैट यू शुड नो द फैक्ट्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। या तो आप एमएसएमई करें या स्टार्टअप करें, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाग, ठीक है ना। इट इज कॉमनली सेड एज एमएसएमई इज नर्सरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले कोई शुरू करेगा तो मीडियम इंटरप्राइज से शुरू करेगा, ठीक है, बोलो सही है या नहीं। सबसे पहले माइक्रो से शुरू करेगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की नर्सरी जो है वो एमएसएमई है। एमएसएमई में पर्टिकुलरली माइक्रो है। कोई बहुत ज्यादा जनरस हुआ, मान लो टाटा बिरला का कोई पैदा हुआ तो कहेगा अच्छी माइक्रो से करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, ठीक है ना। तो वो हो सकता है स्मॉल से शुरू करे, शायद स्मॉल से बड़ी से शुरू ना करे। क्लियर, एग्रीड। तो सबसे पहले माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, वेदर यू कैन रियली गो फॉर दिस और नॉट, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं लोग बात शुरू करते, एक चीज बताओ क्या वजह है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दो, रिस्क, ठीक है ना। तो रिस्क जो है, हाँ रिस्क, ठीक, रिस्क ही है। कौन सा रिस्क, फेलियर का रिस्क, ठीक है। उसको बेटा बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी के नाम पे उसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। इवन एक फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो फियर ऑफ फेलियर था, फिर मैंने जब अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया तो उसमें मुझे एक वर्ड मिला फियर ऑफ सक्सेस, और मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहा फियर ऑफ फेलियर तो समझ में आता, फियर ऑफ सक्सेस क्या है, ठीक। फियर ऑफ सक्सेस क्या हो सकता है बताओ, आइडिया। फियर ऑफ सक्सेस वही है कि सर 100 करोड़ रुपए मिल गए तो क्या करूंगी, ये फियर ऑफ सक्सेस है, ठीक। ये फियर ऑफ सक्सेस है कि क्या करूं, ठीक, क्लियर। तो ये सब चीजें रिस्क वगैरह जो है ना बेटा मैनेज की जा सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके लिए एक लंबे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह की जरूरत पड़ती है, छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप ये मान के चलो कि भारत सरकार, राज्य की सरकार और बहुत सारी दूसरी एजेंसीज जो हैं, ये सब के सब आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हुई, ठीक है ना। एनएसआईसी से हमारे सर आए हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज, वो भी बिल्कुल पास में ही है आपके, कभी मौका लगे तो जाके आइए। और ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप अभी इसी समय में या यहाँ पे जो ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं आप इसके बाद कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऊपर जाने से पहले, ठीक। इवन जैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर होने के बाद भी मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है, लेकिन की है, ठीक है। तो ये कभी भी शुरू की जा सकती, हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपको लगे आप शुरू कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। फियर ऑफ सक्सेस का एक एग्जांपल दूं आपको, फियर ऑफ सक्सेस का एक एग्जांपल दूं। क्या है, पहले के जमाने की बात है, तो जैसे जब लॉटरी वगैरह वो सब बिकती थी, लॉटरी की टिकटें उकटें बिकती थी, कामधेनु लॉटरी फलाना ठिकाना, और ऐसे करके लोग बैठे रहते थे। तो ऐसे लॉटरी की टिकटें बिका करती थी। तो उस समय में था कि अगर किसी की लॉटरी निकल गई तो उसको सीधे खबर नहीं दी जाती थी, जाया भेजा जाता था कि भाई जाए कोई ये करे, नहीं तो क्योंकि सामने वाले का ये लगता था कि अगर इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, उसकी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसको जाके सीधे खबर दे दी तो हो सकता है उसका हार्ट फेल हो जाए, पॉसिबल था, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक की लगी लॉटरी, गांव की एक ताऊ की लॉटरी लगी, ठीक। तो उसके पास में ऐसे मैनेजर को भेजा गया, वही जाके उसको खबर दे रहे, लेकिन धीरे धीरे खबर दे रहा, उसकी पूरी ट्रेनिंग थी। क्लियर, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो वहां पे वो गया, बोला कि जाके बोला भाई हाँ, बोला ताऊ, बोला हाँ, बोला कहाँ से आया, शहर से आया, बोला हाँ, बोला कहाँ से आया, बोला मैं लॉटरी डिपार्टमेंट से आया था। बोला हाँ हाँ भाई बैठो बैठो बैठो, बिठा लिया भाई उसको। बोला ताऊ एक चीज बताओ, अगर मान लो आपकी 100 रुपए की लॉटरी मिल जाए तो क्या करोगे, ठीक। बोले 100 रुपए की अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे। ताऊ ने थोड़ी देर सोचा, बोला भाई 50 रुपए का तो प्रसाद चढ़ा दूंगा हनुमान जी का, 50 रुपए बच्चा ने खिला दूंगा, कोई चीज खिला पिला दूंगा, और क्या 100 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा। बोला अगर मान लो 1,000 का लग जाए तो। बोला भाई बहुत दिन हो गए, एक धोती खरीदने की सोच रहा था, एक धोती भी खरीद लूंगा। बोला अगर मान लो 1 लाख के लग जाए तो। बोला 1 लाख के लग जाए यार, तो पंप पंप और खरीदे थे खेत के लिए, वो सब भी ले लूंगा। अब मान लो 10 लाख के लग जाए तो। बोला ट्रैक्टर लेने की बड़ी दिनों से इच्छा थी, ठीक है ना, ले बेटा अगर तू कहा और मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक ट्रैक्टर भी ले लूंगा। बोला और मान लो 1 करोड़ की लग जाए तो। बोला सोच रहे दिमाग खराब कर दिया, तो ले दे दूंगा, जा मैं तुम्हें दे दूंगा। उस लॉटरी वाला जो गया था उसका हार्ट फेल हो गया। ये फियर ऑफ सक्सेस है, ठीक है ना।
आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट कि फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है। वो फियर ऑफ सक्सेस में उसका हार्ट फेल हो गया, बोले यार ये तो तब इतना दरिया दिला दिया, बोलता मैं तुम्हें दे दूंगा, छोड़ो। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इस पे देख लेंगे, नहीं तो आप लोग मेरे नंबर पे बात कर लीजिए, ऑफिस में जाके बात कर लीजिए, कभी भी आप लोग जाएंगे तो उस पर मिल जाएगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैडम एक एक स्कीम के बारे में अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एनएसआईसी वाले कवर करेंगे, हमारा काफी कुछ उससे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और पैसा जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पैसे के हमने कुबेर साहब को बुला रखा है, ठीक है ना। अग्रवाल साहब बिल्कुल पिटारा लेके आए हैं, आप लेने वाले तो बोलो, आप अपनी काबिलियत तो दिखाओ। बेटे टाइप करो 100 और इंटर मार दो, 100 करके इंटर मार, 100 टाइप करो और इंटर करो, ठीक है। तो आई होप द सेशन यू एंजॉयड इट, ठीक है ना। ये है मेरा, है नहीं, लास्ट के स्लाइड दिखा दो चलो। बिल्कुल लास्ट के साइड, हाँ ठीक है। तो विद दिस आई विल लाइक टू थैंक एवरीबॉडी। और भाई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो बुरी मत जानना ज्यादा, ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों से पहले चला जाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर को एक गंजा सा आदमी मिलेगा, सर देख लेना उसको, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है ना। तो मैं अभी चला ही जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, ठीक है। और आई होप यू विल कंसीडर दिस, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत होता है। नाउ यू आर सक्सेसफुल, यू कैन बी सक्सेसफुल, देन ओनली यू शुड एंटर इनटू दिस। ये क्योंकि थोड़ा रिस्की वेंचर तो है, और इसको रिस्क को कम करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस हो, लर्नेड हो, इस टाइप का हो, और उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक। Thank you so much, sir, for giving such vital information to our students. I hope now the budding entrepreneurs, the mind have been started running. I hope so. Moving ahead, we have with us Shri Gaurav Kumar Agarwal, the Assistant General Manager of State Bank of India. Having total experience of 15 years in corporate finance, project analysis, branch banking, and digital banking, he has successfully completed important assignments like being Chief Manager of Small and Medium-Sized Enterprises at Netaji Subhash Place and Rudhpur. Presently, he is the head of processing cell for high-value loans from 30 crores to 500 crores for Delhi Circle. I invite you, sir, to inform our students about MSME schemes of banks. Good afternoon, all the respected dignitaries on dais, dear students and respected faculty members. It's my privilege to be here again in the college, sharing some views on the banking financial perspective, which is very important. Once we have idea in our mind, everything is set, but we need funds to kick off. To start the business, we need funds, क्योंकि बिना funds के आगे बढ़ना मुश्किल है, बिना funds के आगे कुछ हो नहीं सकता है। सारी बातें हो सकती हैं, आइडिया हो सकते हैं, बट एवरीथिंग इज इन माइंड। टू पुट द आइडिया ऑन द ग्राउंड वी नीड फंड्स, टू फ्लोट दैट आइडिया वी नीड फंड्स। So I've been working in MSME for last 15 years. So we examine proposal from various businessmen who come to us for sanction of loan. So we examine them from different perspectives. So regarding business, I will share my views ki what is the business and what is important in business, and how funds can be arranged in a business.
So that's what I will cover. I will also cover the various schemes from the banks. So again, as sir has also covered what is startup. From my angle, I will cover a little bit regarding startup. What is important in startup? Startup is a company or project undertaken by an entrepreneur to seek, develop, and validate a scalable business model. What are two most important thing that there must be some idea in your mind that what product I am going to sell, what service I am going to provide to the public. And it can be anything, it can be service, it can be product. The purpose of idea is to make the life of people simpler or to provide them better product what they are using now. And there should be market of that product, whatever service you are going to provide, whatever product you are going to sell, there should be market. And we are lucky that in India, so in India there is huge population which is consumption of our product is itself so much in the country that if you start a business तो आपका काफी सारा सेल जो है अपने इंडिया में ही हो सकता है क्योंकि we have lot of population, तो consumption is very high in our market only. And it should be a problem solver or opportunity creator. So I will name some startups which started their business. Now they are big companies, but when they started, like Ola, Uber, Paytm, everybody must have used Paytm. आजकल ऐसा है कि बिना Paytm के पेमेंट सिस्टम हैज चेंज कंप्लीटली, क्योंकि पहले कैश इतना चलता था या लोग आरटीजीएस एनईएफटी करते थे या जो है कार्ड स्वाइप करते थे. आज की डेट में कार्ड स्वाइप भी कम हो गया है, यूपीआई से ही पेमेंट ज्यादा हो रही है. तो we can see the paradigm shift in the digital banking. So our idea should be a problem solver or opportunity creator. We everybody must have used Swiggy or Zomato. Idea was to give convenience to the people to order the food from their favorite restaurant so that they can have the food at their home only. Earlier 10 years back कोई मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है रेस्टोरेंट बिना जाए हम खाना खा सकें जो है. Next. And why funding is required by businesses, by startup? So there can be several reasons for which funding is required, like prototype creation. When we go into a business, we need some trademark registration, etc. So they involve a cost. Then product development stage, team hiring. When we starting in when we are starting a business, so we need team of people who will be working with us. So for that funds are required. Then working capital. Working capital is the most important part for funding requirement, because आप कोई business setup किया आपने, उस business को setup करने में suppose you are manufacturing a product, तो आप उसका raw material purchase करेंगे. So for raw material purchase, you need funds. Then you will process those raw material and convert them into finished goods. So you will keep finished goods for some time in your factory, in your godowns for some time. Then it will be sold to the purchaser. Then you will give some credit period to your buyer, suppose 90 days, 60 days. So whatever fund you have invested at the time of raw material purchase will come to you after 90 days, 120 days, depending upon the services or product which we are offering. Then legal and consultancy services, raw material and equipment. Of course, for manufacturing raw material is required, and for purchase of raw material funding is required. Then licenses and certifications, marketing and sales. आज के टाइम में हम देखते हैं कि huge investment is being done by the companies on marketing. You must have seen the ads, very creative ads at the time of World Cup, which are coming on the TV. We have seen the ad of Spinny. Anybody remember Spinny ad? So Sachin Tendulkar is doing advertisement for that Spinny. So they are buying old cars and selling to the people. Like Cars 24 है, और बहुत सारे जो players हैं market में, they buy old cars. So that is the business. So to create the awareness, अगर वो इतना advertisement नहीं करेंगे, तो people will not know what products and services are available in the market. And then of course office space and administration.
expenses. When you have a team, when you want to do business, you need some manufacturing place or some administrative place. So you will either you will buy that place or you will take on rent. So you will have to pay rent, and for that funding is required. Then type of startup funding. These are the type of funding which is applicable for other businesses also, not only for a startup, other unit, small units. Generally, we start business from micro enterprises only. So equity financing is there, debt financing is there, and some grants. When equity financing is to fund the business from your own sources. When you start a business, so some fund is available with you also. We don't take loan for 100%. Suppose if you conceive an idea in your mind, okay, I will start this business, and to start this business, total funding requirement is 10 lakhs. So you will analyze in your mind, okay, I have 3 lakhs with me. Now I have to arrange 7 lakhs more to start this business. So 3 lakh is your contribution toward that business, and that is the equity for the business. Then debt financing is you will raise money from the market, debt instrument, or you can take loan from the banks. So that is debt part. On debt part, you have to pay interest or installment as applicable to the banks or as per terms agreed. And other is grant. So there are many schemes in which government is providing grants to the businesses depending upon the various schemes available. Like there are some schemes, grants which are provided by state government, and some grants are provided by central government. So different schemes are available across the states and also by central government. So these grants are provided after completion of the project, and you don't need to pay it back to the government. So that is the aid, that is the help which is being provided by the government to start the business, to create employment. Then this is very important thing. What do investors look for in startup? अगर कोई investors हैं and आप चाहते हैं कि they are attracted for investment in your idea, in your business, so what do they look for? So any investor will look for these certain traits in your idea and your business, like objective and problem solving. Okay, what is the objective of your business? What is the idea behind your business, and what problem it is solving, or what betterment it is providing to the society? Management and team. Who is the person behind the business? Who is the man who has come up with the idea? And then market landscape. What type of market is available? क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आता है तो जनरली कंपनी टारगेट markets on city wise. Like first company will come to tier 1 cities, then when tier 1 cities are captured, they will move to tier 2, tier 3 cities. So depending upon the business, depending upon the product, depending upon the business model, markets are there. Scalability and sustainability. Then investor will see ki okay, this product is feasible for only tier 1 cities, or further after establishing it can move to tier 2 or tier 3 cities also. Like I will take example of Swiggy and Zomato. They started their business from metro cities, big cities, but when they established their business in these cities, they moved to tier 2 and tier 3 cities also. So now these services are available in those cities also. Then customers and suppliers. Whatever product I am manufacturing or whatever service I am providing, there should be customer for those products or services. And कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कौन कौन कंपटीटर हो सकते हैं उसमें. ऐसा तो नहीं कि दूसरे कंपटीटर इजीली एंटर कर जाएंगे उस मार्केट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए. दैट इज ऑल्सो कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स. सेल्स एंड मार्केटिंग. हाउ विल दे डू मार्केटिंग फॉर देयर प्रोडक्ट. फाइनेंशियल assessment. They will do the financial assessment of the entire business model. What are the fundings which are required for running that business, and कितना वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय इन्वेस्टर्स. देन एग्जिट एवेन्यूज. अगर वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद वो उसमें से एग्जिट करना चाहेंगे उस कंपनी में से, और एग्जिट करेंगे तो आगे क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी. तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय द इन्वेस्टर्स
when they invest in the company. Why do investors invest in startup? वो क्यों करते हैं? Mergers and acquisitions. I will give you a very small example of merger and acquisition. Like everybody has ordered medicine from 1mg app. Have you heard 1mg app? Okay, so when Tata thought of entering into this business, so now it has become Tata 1mg. Earlier, 1mg was a separate business floated by some separate person. But when later on Tata decided to foray into this business, so उन्होंने पूरा इकोसिस्टम नया क्रिएट करने के बजाय they thought of acquiring someone who is already there and has developed good brand value. So now it is Tata 1mg. So this is the example of acquisition when a big player want to enter into some business, some area or some new product lines. Suppose they want to enter into the business of apparels or cosmetic items. So it is not necessary that they will manufacture those items. They can outsource their manufacturing or they can acquire some player who is already there in the market. Or if a company is operating in the northern part of India and now they want to enter into western part of India, so rather than expanding their existing business to that area, they can even acquire some player who is operating in western area. So this way they can increase their business. Then selling shares, distress sale, buybacks, not much important for this. Then avenues for funding of startup. Pre-seed funding. Pre-seed funding is what is your contribution at the very early stage. Like I gave example of 10 lakhs rupees. If you have 3 lakhs in your pocket, then this is your contribution towards the business. You can also borrow money from your friends and relatives. So that can also be a source of fund. Then seed funding is that when you meet an investor then or arrange the funds from bank or some other institution. So that is seed funding. Then there are different government schemes which help in funding for the MSMEs and startups. Like sir has also mentioned ki a startup is having certain criteria, eligibility criteria. Apart from that, there are different schemes also which are implemented through banks. Like collateral free loans are also given by the banks to the young entrepreneurs or new MSME units. Incubators also help startup for their handholding. Now, there are some schemes of funding for startup or we can say for MSMEs also by SBI. If we see all these schemes are the idea of government on the basis of which our bank has come up with the schemes like Stand Up India. Stand Up India is a scheme which is for women entrepreneurs especially, and a loan of 1 crore can be given without any collateral. So women entrepreneur must be having majority stake in that firm. And another is Pradhan Mantri Mudra Yojana. This is very popular. Government has launched this scheme, Mudra scheme. Under this scheme, there are 3 variants: Shishu, Kishore, and Tarun. In Shishu scheme, loan of up to 50,000 is given, and in Kishore, above 50,000 to 5 lakhs loan is given, and Tarun is up to 10 lakhs, above 5 lakhs to 10 lakhs. The important thing is this scheme is that these are collateral free loan and guarantee is covered by a fund which has been managed by the government. Government has kept aside a fund which is giving guarantee to the banks for giving collateral free funding. This is another scheme is loan under CGTMSE scheme. If a person or if a business is not falling as eligible under Stand Up India or Mudra Yojana, suppose you want loan of 50 lakhs or 1.5 crore, then you can take loan under CGTMSE scheme. CGTMSE is a fund which has been managed by the government for giving guarantee to the MSME units. So loan up to 5 crore can be given under this scheme. Then loan under startup policy. Bank has specially formulated a policy
for financial assistance to startups. So definitely there is eligibility criteria for a startup. If a startup is eligible and it is registered with DPIIT, please note down or website of DPIIT. It is the website managed by MSME department, dpiit.gov.in. This is very good website. I have served this website, and lot of information related to MSME units and various schemes is available. Even if अभी आपको कोई काम भी नहीं हो, तभी भी आप उसको एक बार जरूर देखिए. You will have an insight कि what types of information are available there. So at a later stage, after 2 years, 3 years, 5 years, when you want to when you need that information, you can always refer to that website. That is very good website. I found it very good, very informative. So banks are also giving loan to startups, and up to 10 crore we are giving collateral free. So these eligibility criteria for a startup were covered by sir also. Constitution should be private limited company registered partnership or a LLP. Recognition should be registered with or recognized by DPIIT, Government of India. Then only it will be considered for funding in startup policy. Otherwise, what will happen? Everybody will come ki this is my startup. I am installing this machine. I will manufacture this product. I will provide this service. So it will be very difficult to acknowledge that business idea as a startup. So it has been mandated that it has to be registered with DPIIT. Then age of startup to be aligned as per respective state-wise startup policy, or maximum of up to 10 years in line with DPIIT Government of India guidelines. Then next is it should be working towards innovation, development or improvement of products, processes, services. As I said earlier, there must be some improvement. Either you provide comfort in existing process, or you provide some comfort, you generate some new requirement. Okay, this is also what we can do. And one very important thing is, if it is scalable business model with high potential of employment generation or wealth creation. So these are very important words which have been written for making eligibility criteria of startups. Then turnover has to be aligned with respective state-wise policy, or in general, it is said that up to 100 crore turnover that will be treated as startup. After 100 crore, we cannot treat that firm as a startup. One thing I would like to add here, that we have opened special startup branches in SBI. In India, we have opened 4 branches, especially only for a startup, which provides various help, information to create ecosystem of startup. Whatever information or whatever help is required in creating or nurturing startup business, all type of help is being provided in these branches especially. So these we are having largest branch network. In startup branch, we are having dedicated relationship manager who will take care of your requirement. He will be your one-stop solution. And complete banking solutions are there, best in class digital product. Aajkal digital ka zamana hai, everybody. And going forward, I will request you to understand digital products बहुत अच्छे से आप उसको समझना, तो your efficiency will improve. और as a owner of the business, अगर आप digital products को embrace करेंगे, तो your employees या जो आपके साथ के लोग होंगे, तो वो भी उस चीज को समझेंगे, and this will enhance the overall productivity, overall efficiency of your organization. There various solutions are provided to the business in the branches, like loans, deposit schemes, collections, transaction banking, payment related issues, outward inward remittances, forex related schemes and products, insurance product, credit card, mutual fund, custodial services. Even nowadays SME firms are coming up with IPO. Do you know about IPO? Any idea about IPO? What is IPO? Anybody can answer? Yes. What happens in initial public offering?
Yes, when company goes to the public for raising money, so they raise the money from the public, then public become the shareholder of that company. So initially, nowadays it was confined to the big companies only, but of late now SME IPOs are also upcoming in the market. In the category of SME, their SME firms can raise funds from the public. उसमें क्या बेनिफिट रहता है आईपीओ में कि उनको वो शेयर होल्डर्स मिले तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना होता है उसमें. अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो उनको रीपे करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. But when they raise equity from the market, so they are equal partners for that amount in the business. So that is the idea behind IPO. So these consultation is also being provided in the branches to the entrepreneurs MSME units. Then there is one portal, digital portal of Yono Business, which has covered maximum services being provided by any bank. And in this portal, this covers internet banking, supply chain, finance related products are also being covered here, and cash management product, forex related product. There are some businesses which involve foreign exchange when they export something to other countries or they import raw material from any other countries. So all these are part of banking. Now entrepreneurs like you have put India on the global map. Of late we have seen many unicorns coming up from the India only. So quickly companies are growing because market is huge in India. Whatever the products which are being offered, whatever the services which are being offered by the entrepreneurs, they have huge market in India only. And even if there is some excess production or excess services which they can provide, they are exported to other countries where demand is there. So that is all from my side. If you have any queries regarding banking or finance, please let me know, because it is very difficult to cover everything related to banking in such a short time. So please let me know. You may have certain queries कि how to get loan, why, और कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. If you have any sort of queries, please tell me. Actually, in CGT MSc, interest rate depends upon the rating of a customer. When a customer comes to us with a balance sheet that we want a loan, or even if it's a new business, then we do assessment on the projections for future years, like next 3, 4, 5 years. We do assessment, and on the basis of assessment, we get a rating of that unit. On the basis of that rating, interest rate is decided. So generally, interest rate is nowadays it is around 11%. Any other question by any of the student? Without funding, you cannot implement your idea. It is very important to understand funding, because if our idea is involving use money which we cannot arrange, then it's of no use. Okay, then. Thank you. Yes, please. For what? No. If you see, you have to understand your project, then you will understand what is the project cost which is involved. So you will analyze that if you want to start a business, if your business requirement is suppose 50 crore, then you will give your own contribution. Okay, I have 15 crore. Now I have to arrange 35 crore. Then bank will give loan of 35 crore. Bank cannot give the loan of 100% project cost. Bank wants some stakes to come from you. You will have your stake, then bank will have a stake, then project will take off. Okay. Okay, thank you. Thank you, sir, for giving information to our students about the fund acquisition and requirement
to start the entrepreneur ideas. Now we have with us Shri Chetan Sharma, Manager of National Small Industries Corporation Limited, New Delhi. NSIC is a Government of India enterprise working under Ministry of MSME. Sir, I request you to guide our students about NSIC schemes. Good afternoon, all of you. First of all, I'm really thankful that we are the part of this program. And a special thank for the Deshbandhu College, University of Delhi. Special thank for the Professor Shri Kamal Kumar Gupta. A special thank for Srimati S. Shakti Rani, Assistant Director, MSME DFO. Dr. Shri K.K. Goyal Sir, Ex-Assistant Director, MSME DFO. Gaurav Sir, AGM SBI. Shubhangi Ma'am, Successful Entrepreneur. And Shri Dr. Jitendra Kumar, Co-Conveyor. So we are here to introduce you what NSIC is and what we do for the MSME sectors. So basically, I define myself initially. My name is Chetan Sharma. I'm working as a manager in NSIC Limited, branch office, Delhi. So my office is nearby your place. It's just very near to the Govindpuri metro station. So just come to the point without wastage of much time. So NSIC is a stand for National Small Industry Corporation Limited. So we are a central government body. We comes under the Ministry of MSME. Next slide, please. Let's see. So NSIC is objectives to add, console, finance, assistance, protect, promote all the MSMEs. Vision to be premier organization fostering the MSME sector across the country. Missions to fine. Let's continue with this slide only. And it's fine. I can start from this one also. NSIC divided into two parts generally. The first one is NTSC. The second one is the commercial sector. So NTSC stands for NSIC Technical Service Center. And the commercial sector, the commercial activity that is called as marketing and credit department. अब जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सर और गौरव सर ने बताया कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? यू हैव ए आइडिया बट यू डोंट नो कि इसको स्टार्ट कैसे करना है. So NTSC stands for NSIC Technical Service Center, where you are most welcome, where you can find the live project. We have an incubation center in which you may find the lots of live projects. Idea है, machine खरीदनी है, कहाँ से खरीदे? Nobody knows. चलती कैसे है? Nobody knows. कितनी मैन पावर की जरूरत है? Nobody knows. लैंड की कितनी जरूरत पड़ेगी? That you have to calculate. उसकी रॉ मेटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, फिनिशिंग कॉस्ट कितनी आएगी, दैट आवर एनटीएससी विल टेक केयर. सो इन एनटीएससी लाइव प्रोजेक्ट इज देयर वेयर यू कैन फाउंड which machine you required, where you can buy the machines, which vendor you can buy the machine, what is the approximately cost of the machine, the land space what you required, what is the raw material cost you required, where you can purchase the raw material,
what is the processing cost, what is the manpower required, what is the electricity consumption, and what is the final cost of your product. So that is the NTSC will take care. So apart from this, I'm just coming to the marketing and credit supports. So that is the commercial part that NSIC will take care. The number one is a raw material distribution. That is called as GPP. The second one. Third one is tender marketing. The fourth one is e-marketing portal, marketing events, credit supports, and the bank type scheme. Come to one by one. Raw material distribution stands for when you have a one setup and you require some material. Definitely, you can purchase the material through your own, but you require the material with a subsidy rate that we can help you out. So in raw material distribution, we have a MOU signed with the maximum PSU producers, where they can provide the material on subsidy rate to their respective factory or to their respective worksite locations. So what you have in that case, what you have to do, you have to just give your requirement to NSIC Limited. We can purchase the material on behalf of you, and the consignee address will be your factory or your site address. The second one is the government purchase. That's the point where the young entrepreneurs or MSME, they required this format importantly. आप लोगों को टेंडर के बारे में किस किस को पता है? थोड़ा बहुत आइडिया, टेंडर क्या क्या होता है बता सकते हैं प्लीज? गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो फिर वो टेंडर निकालते हैं और फिर अलग अलग कंपनीज उस पर अपनी बोली लगाती हैं कि हम कितने अमाउंट में कर देंगे. एग्जैक्टली होता यही है. किसी भी आप कोई भी आप जब टेंडर कोई भी फ्लोटिंग बॉडी होती है, कोई भी परचेजिंग बॉडी होती है, तो एक टेंडर फ्लोट करती है. टेंडर फ्लोटिंग के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. द नंबर वन इज EMD कॉस्ट, द सेकंड वन इज टेंडर फीस. बोथ आर मैंडेटरी. लाइक फॉर ए कंपनी हु इज ए MSME सेक्टर, गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस है. गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप MSME के सेक्टर के अंदर आते हैं तो आपको ये दोनों चीजें एग्जम्पशन हो सकती है, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन. लोग NSIC के पास इसलिए आते हैं, कोई भी MSME सेक्टर हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि NSIC एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है विच इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट परचेज पॉलिसी. कुछ लोग उसको GP सर्टिफिकेट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट परचेज सर्टिफिकेट. सम पीपल इज कॉल्ड एज NSIC सर्टिफिकेट, सम पीपल इज कॉल्ड एज SPRS, दैट इज सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम. 4 terminologies. Certificate is one, and the benefit of this certificate is, let us suppose if you are participating any of the tender and you're having an certificate, this certificate is valid for 2 years and it's having some value. And the cost of the certificate is depend upon certain terms and conditions like your balance sheets and turnover, your sales, some figure is there that we have calculated with the help of some calculations or formulas driven by our accounts and finance people. The certificate is valid for 2 years, and with the help of this certificate, tender fees as well as the EMD cost, both are exemption and maximum common purchase body standards. Any questions? The first 2 cases? You're free to ask. Shall I proceed for the third one? Fine. I'm coming to the third portion is that is called as tender marketing, right? Material factory में बना तो लिया, बेचना कैसे है, ये important होता है चीजों के लिए. So NSIC come into the picture where we can participate on behalf of you towards the tender procurement body. And once we got the order, we simply divert it to the MSME. You can say that it's a back-to-back order. एक body ने मेरे को दिया, मैंने आगे float कर दिया. So the focus is to the MSME to manufacture the product and to supply the orders. MSME raised the bills to us. We are raised to the bill to the procurement body. The payment is come to the procurement to NSIC, and we are just floated to the MSME order which we have given to them. इसकी एक certain fees होती है, which is vary certain conditions. Next come to the point, that is e-marketing portal and the marketing events, right? E-marketing portal and marketing events.
like NSIC is organizing such a programs in which we have certain stalls where MSME can participate through NSIC, and subjected to condition is the company should become under MSME umbrella. It could be micro, it could be small, it could be medium. The condition is very simple. Audible? Audible? Fine. I'm coming to the point of e-marketing portal and marketing events where NSIC, any MSME units can participate any exhibitions through NSIC in which they will get some subsidies. In these cases, we can provide a particular stall. आप सब लोग जैसे अभी ट्रेड फेयर में जाएंगे, कहीं से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई है? Good, fine. So you may find some of the job stall के ऊपर देखोगे तो NSIC लिखा होगा, right? उन केसेस में we can provide some subsidies to the MSME units. तो उस केसेस में उनको जो कॉस्ट होता है, only the cost is they have to bear to and fro and the show like मशीनरी का मूवमेंट होता है. Now the comes is a credit sub. यहाँ तक क्लियर है? All clear to everybody else? 1, 2, 3, 4, 5. Any questions you have, you may please free to ask. Fine. Come to the next point. That is raw material support. जैसा कि रिस्पेक्टेड सर अग्रवाल सर ने बताया कि किसी भी फंड्स कंपनी चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है एंड कंपनी शो रन करने के लिए आपको मेटल की कॉस्ट की भी जरूरत पड़ती है. Now, for example, if you have a one setup with your some machines, right? You have a manpower, you have a space, you have each and everything. You have a raw material, but the case is you don't have any much more fund in your pocket. So what do you do? So definitely you have to take some credits, right? The respected sir ने बताया कि credit could be 60 days, credit could be 90 days. Sir ज़्यादा भी होता है क्या? अग्रवाल सर ज़्यादा भी होता है credit period क्या? Maximum 90? Chale, fine. I just consider maximum up to 90 days, right? So what you have to do in that case, we just provide the raw material. For example, you just purchase a raw material for your vendor, and the definitely vendor will provide you one type of a bills. It could be either be tax invoice or it could be either be of perform invoice. So what you have to do in that case, NSIC will come into the picture where we can pay. And once again, I'm repeating this line. We can pay on behalf of a MSME units to your vendor to purchase the raw material at your factory's premises or either be at your site premises. Now let's suppose a person having a factory premises, उसके पास एक छोटी सी 2-3 machines हैं उसके पास, and they required some plastic granules material, right? Apart from this, another example, another person is there and he is having some basic, like suppose infrastructure unit, civil work is there, right? In both the cases, person A is required some material which is used in their factory premises, and the person second case, they required some cement, steel, or it could be anything at their factory or site addresses. In both the cases, we can help it out. So definitely, they place some order to their vendor. The vendor provide the bills to the units. The unit is passes to NSIC, and we just pay on behalf of MSME unit to their respective vendor to get the material, to get the work completed. So in that case, particularly, just we can provide the sum of the credit period maximum by 180 days. In short, वो पैसा आप 180 days तक आप NSIC को वापस repayment कर सकते हो with some rate of interest. That rate of interest can vary up to certain period of time. Definitely, in that case, when government is paying to your vendor on behalf of you to get the material, so definitely we required some security. The security, what we called as the bank guarantee. Bank guarantee is a financial instrument that we required. So जो भी bank guarantee का amount होगा,
that we can provide the material, we can pay to your vendor on behalf of you against the bank guarantee as a security to NSIC Limited. Any questions, please? Yes, बताइए please. Yes, it's a security is a two types, and actually it's a non-fund type instrument. The non-fund type based instrument, two types is one. Number one is bank guarantee. The second one is called letter of credit, LC, right? We generally take bank guarantee. So it's a paper like paper document, what we receive as a security. So that's just all about. Any questions with the raw materials credits? मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा. Any questions, please? Fine. Come to the next point. Last one, right? That is a bank tap skill. Generally, I could just call him bank tap scheme. जैसे कि respected अग्रवाल सर ने बताया कि किसी भी show को run करने के लिए you require some funding, right? So in that case, what we do in that, like if any MSME or any startup come our office, what we do, we have a MOU sign up with all the nationalized bank, maximum we cover all the nationalized bank. We take a proposal from MSME unit. We attach a one recommendation letter along with the MOU copy. And let us suppose a new startup has come to our office and they require some fund. So we simply ask a question ki which bank you are comfortable. Let us suppose bank A, B, or C, right? So we just told him ki just come with the proposal, and along with the proposal, we just attach a one recommendation letter along with one copy of a MOU. We simply send all the three banks as per the comfortable level of any unit, whether bank A, bank B, or bank C. Definitely the proposal is all cross-checked by the banks because they are expert. Once any of the company is connected, any of the bank, let's suppose a company A is connected with the bank B. Once the company A connected with the bank B, after that, our work is over. Now company with bank B, they have to disconnect with each other. So in short, you may say that we are the bridge for a company and a bank. In this case, we don't charge anything from either the company or either from bank. Is that clear? It's a very simple scheme. Any questions up to there? Any questions, please? The next. एक मिनट. यहाँ पर किसी को questions, please? Any questions? Yes, exactly. Yes. No. And the entire proposal is checked by the bank. Entire. We are you may say that we are just acting as a bridge for you. For example, that is a company A. You come to us along with a proposal. Just simply ask a question: which bank you're comfortable? Bank A, Bank B, or Bank C, or Bank D, whatever it could be. So you say that ki my workplace, the bank. Let's suppose B is comfortable with you as per your distance point of view, right? So what we do generally, I have taken a proposal from you, right? Make a photocopy of 4 sets, 4 recommendation letters, submitted to Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, right? Let us suppose your company is connected with the Bank B. My work is over. And that's just you and the Bank B. So it is your comfortable level. You're comfortable either with Bank A, Bank B, Bank C, or Bank D. All the terms and condition is taken care by you as well as the bank. So this is the raw material distribution, what I told you earlier. Okay, we have some subsidiary components with us. Similarly, company like material like steel, copper, zinc, paraffin wax, coal, bitumen, cement, polymers, etc. Similarly, the reduction of cost material, because the reason is behind that, across the India, we are having 50 offices. And what we do, we have a bulk discount on pan-India basis. In that case, a company required a certain material, either be it's a 1 ton or 10 ton
they will get the discount of maximum profitable level, because we are having a sign a MOU with the highest discount factors level. So that is about this is brief note of RMD. So next, please. That is the what I told you, the NSIC certificate, which some people is called as MSME certificate, some people is called as SPRS, some people is called as GP certificate, some people is called as GPP, that is Government Purchase Policy, Government Purchase, Single Point Registration Scheme. NSIC certificate, terminologies are different, but certificate is same. It's having some cost, and the certificate is valid for 2 years. Next, please. Any questions on this? Tender marketing, same fundamentals. Material बंद हो गया है, बेचना कैसे उसको? So in that case, just we will help you out, and NSIC will help you out. So what we do, and we just participate on behalf of you, of any other tender participate. Once we get the order, we simply just pass on to you. We are having certain fees, and you may say that it's just a back-to-back order. Once आपको करना कुछ नहीं है, you get the order, you have to just manufacture the order, finish the goods, and just supply the material to the respective authority. You raise the bill to NSIC, we raise to the concerned person, the payment received to the concerned purchasing authority, we will hand it over to you. And in that case, just we having a certain charges, which is very point to point. Next, please. It's a B2B portal. NSIC having a one B2B portal also, which is called as MSME Mart. आप एक बार इसको लिख लीजिए, MSME Mart. जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं. MSME Mart. कुछ नहीं है. So next, please. It's an exhibition with buyer seller meet. अभी एक आपने बोला था शायद एक ट्रेड फेयर. इस बार जाना तो NSIC का बोर्ड देख लेना. So in this case, just we simply we have some stall allocated by the government, and we just hand it over to the MSMEs unit, which is participate in a particular event. Channel routed through NSIC, and they get some subsidies over there. In subsidy, they're having some different parameters like women entrepreneurship. People are some like hilly area, something like that. So the subsidy is depend upon case to case or vary to vary. Next, please, sir. So bank tie-up, I already told you. This I already told you is a materials procurement activities, marketing activity, just already explained you. If you have any doubt, please ask me. You're free to ask. So next, please. This is our incubation center which I'm talking about in earlier stage. That is our NTSC will take care. So we have some live demo project in NSIC. You may just most welcome and just cross-check all live projects. They will just, you can find out the most of the inputs, how to start, all the parameters, you will get the answer from our defined families. Next, please. Same, next. Right. So this is like, sir, please, piche. The objective of an SIC and the I told you SPRS scheme, the facilitate SC/ST entrepreneurs to achieve 4% public procurement mandate for CPSC, Central Government Department, as per the PPC policy 2012. This is the policies governed by the government in which any entrepreneur, they're from the SC/ST entrepreneur. So procurement body has to purchase 4% of the material as per the public procurement policy 2012. So next, sir, please. So next. So these are our business park. So across the India, we are having some business park. We have offices across the across the India. So it's just a numbers.
NSIC ओखला के मेट्रो स्टेशन पे कौन कौन उतरा है? सामने एक बिजनेस पार्क दिखता होगा, रेड कलर की बिल्डिंग. So that's all about. So we have some like fact offices here in Bhubaneswar and Calcutta. So any other enterprises, they can just rent it out for our office space also. Next, please. So it's a Calcutta office, Space Business Center, Bhubaneswar Business Center. So I'm sitting in Okla. So this is my office address. First one. You're very near to the Govindpuri metro station. It's hardly 5 minutes walking distance from Govindpuri. Or either be you may just drop down at NSIC Okla metro station also. Both are walkable as per your comfortable level. You're most welcome. In Delhi NCR, we are having 4 offices: Okla, Narayan, Faridabad, and the Gurgaon. All the concerned person details are there. Sanjay Kumar Yadav is my reporting boss. We just have to just coordinate with Sanjay Kumar Yadav. Vineet Kashyap is taking care of the Narayana, Nasir Saab is taking care of the Faridabad, and Gandhi Saab is taking care of the Gurgaon office. I think this could be the last one. The next. Thank you. So that is about myself. If you're having any questions, please you're free to ask. Free to ask. Free to ask. Any questions? Sab chalega. I think all about ma'am. Respected ma'am. Can you give an idea about incubation center? Incubation center. So, your question, right? Your question, fine. Incubation center, actually, we are having it in Delhi. We are having incubation center. You are most welcome. What we do, you may find some of the machines, right? For example, we are having a ketchup packing machine, printing machine, and mustard oil machine. कैसे निकालते हैं उसको, right? And few more machines are there, right? Where you can just find out what is the cost of a machine, where you can purchase the particular machine, what is the raw material is required, what is the manpower is required, how much space is required, what is the electricity consumption is required, where you can buy the raw material, and how the machine is processed, and what is the cost of a final product, and what is the O&M, operation maintenance cost of a particular machine. So they will provide you in-depth detail. So that is the incubation center we have, and you're most welcome at any moment in time. Apart from this, you may find some of the more projects. It's live running projects we are working over there, and it's taken care by NTSC. So initially I told you the NSIC divided into 2 parts. The one is a technical service center, which we called as NTSC. The second one is called as commercial sector, which I'm taking care. That is called as NSIC Limited. So I think that's the question. My answer is. Yeah, please. Yes, we have a placement cell in NSIC office also, right? Honestly speaking with you, that is not my covered area. But yes, we have one department over there. When you just enter NSIC gate number 6, you will just find out a job placement. But frankly speaking, it is not my department. So rather than giving a wrong information to you, I just simply just say that you're most welcome and just coordinate with the concerned person. At any moment of even you can just write after complete your college, you may just go down and just meet the concerned person. Anything else, sir? Yeah, please. Yes, we have. Sir, that you have to come, because I told you my concern area is commercial, and you're talking about all the NTC programs. Most welcome. Don't worry. Concerned person name is Vijeta. You may also just note down Vijeta. Anything else, young champions? I think it's all about, ma'am. Thank you. शुक्रिया आप सभी का सहयोग के लिए.
Thank you, sir. Now, students, much of the information about the MSME schemes, NSI schemes, the fund requirement, the acquisition of it have been given to you. Now it's time to get inspired by the true success story of the young entrepreneur. We have with us Miss Subhangni Singh, who owns her own brand, Golden Millets. Golden Millets was awarded as the most innovative startup of 2022, and it was chosen to introduce millet pasta in New York for the upcoming International Yoga Day. She was awarded as Entrepreneur of Year 2022 for her work on millets. Ma'am, I request you to inspire our students with your success story. So everybody doing good? Okay, so as you've all heard, my brand's name is Golden Millets, and I'm representing my brand over here today, which is based on millets. Okay. Now, some of you might know about millets, some of you won't know about millets. Maybe a little, maybe not. Everything together, right? So let's not talk about what is sold on Golden Millets, but how I built Golden Millets. Yeah. So how many of you actually have seen Shark Tank over here? Why did you see it? क्यों देखा? ऐसा क्या मजा आया उसके अंदर? Why did you actually got that interest to see it? Something new, innovative, and for school project work. Oh, okay. Anything else? So entrepreneurial pitch is something you saw over there. Okay. The ideas, the innovation, you know. Did you see repetitiveness in any entrepreneur, any idea? Everything was innovative. That was the commonality, right? So when we talk about an entrepreneur, अब मैं आपको वो विजन दिखाऊंगी. Let's say कि उनका brand जो है, let's keep that aside. You as a person, what do you like? That's the start of a startup. That's your passion. You have a calling. कोई ना कोई ऐसी चीज होगी. It doesn't, it doesn't have to be कि आज ही होगी. No, you will have your own time. एक धीरे 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 बनते बनते बनोगे entrepreneur. वो mindset धीरे 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 आएगा. ठीक है? Where you will surrender first to the God. Second, you will accept that you are going to change maybe not everything, but little bit of something that is going to make a difference. And to be very frank, there is no level of success. Right? So, कभी मंडी गया है यहाँ पे कोई? कभी मंडी गए? वहां पे क्या होता है? क्या चल रहा होता है? कौन बताएगा? Any 2%. एक वर्ड से आंसर नहीं बनेगा. You'll have to stand up. Who said? Oh, come on. मंडी में क्या होता है? कौन बताएगा? खड़े होके बताना पड़ेगा. बैठे बैठे बहुत देर हो गई तुम लोगों की. क्या बोलते हैं? यस. ओके. कपड़े की टांगने वाली. ओके. ठीक है. ओके. यस सर. करेक्ट. करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. राइट. सो मंडी में आप उसने भी बोला सब्जियां. आप सब्जियां कितनी तरीके की हैं? राइट. बहुत तरीके की हैं. एक सेम मंडी के अंदर यू विल फाइंड अ ब्रिंजल विदाउट अ स्टिकर, विद क्लिंग फिल्म एंड नॉर्मल
मे भी हो सकता है रगी बैग के अंदर हो, और एक हो सकता है जो आपको सुंदर से उसने डिजाइन करके लगाया हुआ हो, राइट? वो सारे ही क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? मगर एप्पल्स के केस में, फ्रूट्स के केस में क्या होता है? स्टिकर होता है ना, लोकेशन होती है, कश्मीर के सेब बोलते हैं ना, नहीं 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 मेरे को नहीं लोकल वाले खाने, मुझे कश्मीर के ही खाने हैं, राइट? वो एक टैगिंग कर दी एक उसी एप्पल की, क्यों? क्योंकि वहां का स्पेशल है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं दैट आई ब्रॉट. वील बी टॉकिंग अबाउट 4 फैक्टर्स हियर. फर्स्ट इज व्हाट. What does an entrepreneur mean? What does my product has to be? What should my innovation be? ये सारे क्वेश्चन जब आप आंसर करते हो ना, that's when the idea comes out. ठीक है? तो when I started Golden Millets, ये कोरोना से पहले की बात है. सो मेरी तो कहानी थोड़ी अजीब है, क्योंकि मैं एक सस्टेनेबल आर्किटेक्ट हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दिस पैशनेट. कॉलेज टाइम से ही ना आई वाज लाइक, नहीं यार कुछ अलग होना चाहिए. सब आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, नहीं मुझे ऐसे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में जाना. मेरी क्लास में कोई नहीं था. मेरा डीन कहता है पूरे कॉलेज में कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है जिसको दिमाग में आ रहा है ये. इज लाइक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं जो पढ़ा रहे हैं इसको, एंड यू वांट टू परस्यू दैट. लाइक सर देखो मेरा मन है इसका, let me explore this field, right? So then I started exploring it. Then I said नहीं नहीं, explore करने से पहले I should work in the same field. I started finding people. Do you know मेरा portfolio बिना देखे I got a job. You know why? Later my boss told me, but he said because of your passion with it. Because people with passion, people generate ideas. And when you generate ideas, you're positive. And when you're positive, you make a difference. Maybe small, big, as I said, it doesn't matter. Right? So you're अभी कोई यहाँ से उठ के जा रहा था because she had an interview. Right? That's the start of it. You have to be ignited for things. Anything for that matter. You can be ignited for textile. It's not gender biased. कोई चीज gender biased नहीं होती. We are not in the same stereotypical era now. Nutrition, you can be passionate about anything. पढ़ते पढ़ते बहुत चीजें सीखोगे. ठीक है? तो we start with the idea. So the first thing is what. Okay? What the idea is. Idea has to be innovative. I said millets आ गया. You know, मेरी मम्मा बीमार थी बहुत ज्यादा. And जब आपके घर में होता है ना, you leave everything aside. And you say क्यों हो रहा है? We are eating healthy. कश्मीर के सेब तो खा रहे हैं हम, क्यों? क्या हो गया ऐसा? And then I saw नहीं, ये सिर्फ मेरी मम्मा नहीं. There are so many people around me जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत है. You know, diabetes has become such a fad. अरे मेरे को तो diabetes है, मैं BP की गोली खाती हूँ. And I said यार ये तो एक everyday talk हो गई है. नीचे लेडीज बैठती हैं और यही बात करती है, नहीं मैं तो 2 पे आ गई, मैंने बीपी अभी चेक किया. मैंने कहा ये तो कॉन्वर्सेशन बन गई. बट इज दिस अ रियलिटी? क्या ये पहले कॉन्वर्सेशन सेम होती थी? नहीं होती थी. व्हाट हैज शिफ्टेड? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च. नॉट माय फील्ड, नेवर हैड इंटरेस्ट, बट आई थॉट ठीक है, व्हाट, क्यों हो रहा है ये, राइट? सो मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट मिलेट्स. अब मैंने मिलेट्स को पहले क्लोजली स्टडी किया. While I'm doing all of the work, जॉब कर रही हूँ, अपना डिजाइन्स बना रही हूँ, I have another business वगैरह वगैरह सब कुछ होते हुए, ओके? वहां से धीरे 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 I came to know कि नहीं, इसकी तो बहुत हिस्ट्री है. This is rooted. और ये आगे आने वाले टाइम में I saw vision, आगे आने वाले टाइम में यही चलेगा. कोई बात नहीं कर रहा था तब, कोई उगा भी नहीं रहा था, बहुत कम हो गया था, सिर्फ बाजरा ज्वार उगता था. मिलेट के नाम पे सबको विकिपीडिया पे बाजरा ही मिलेगा आज. 5 years हो गए इस चीज को.
ठीक है, तो वहां से वो आइडिया इनिशिएट हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, अब ना सबसे पहले तो मुझे मेरे सपोर्ट सिस्टम को बताना चाहिए। मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन हुआ? सबसे पहले तो फैमिली, राइट। मैं कहा सबसे पहले तो घर का अनाज चेंज, बोले इसको घर के बाहर निकालो। मैं कहा नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, हेल्थ के नाम पे आपको सिर्फ खिचड़ी नहीं खिलाऊंगी मैं, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। देन आई सो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तब मुझे क्या लगा, तब मुझे क्या दिखा? अपॉर्चुनिटी दिखी। आई सॉ दिस वाज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सबको है, अब इसका आंसर है तो अपॉर्चुनिटी। सो आई से ठीक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेट मी गो थ्रू इट, और पढ़ती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। पढ़ते 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 ऑलमोस्ट 6 मंथ्स निकल गए। मैंने कहा कहाँ से मिलेगा, किससे कनेक्ट करूं, कौन से फार्मर्स उगा रहे हैं, नहीं उगा रहे, कौन से एफपीओ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। आई जस्ट स्पोक टू पीपल, साइंटिस्ट ढूंढे, इंक्यूबेशन सेंटर जैसे बहुत सारे। अच्छा आपको तो मिल रहा है, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं था, आई हैड नो सोर्स एट ऑल। फिर धीरे धीरे लोग से लोग, लोग से लोग, फिर लोग सुनते गए, बात करते गए, नहीं आगे पढ़ो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो ऐसे, ठीक है करूंगी करूंगी करूंगी। दैट्स वेयर द लर्निंग इज हैपनिंग। सो लर्निंग हैपेंस नॉट जस्ट फॉर टुडे, इट हैपेंस फॉर द फ्यूचर। आज जो भी पढ़ रहे हो सकता है तुम कभी डिजाइन क्लास में बैठ जाओ, यू आर वॉचिंग अ वीडियो, यू आर स्किलिंग योरसेल्फ। यू विल नीड एवरीथिंग इन लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर। और गोल्डन मिलेट्स में वो सब काम आया जो मैंने आज तक लाइफ में पढ़ा है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी हो, वो भी मेरे काम आई। एक छोटी सी आई डिड अ कोर्स ऑन फोन्ट्स। मैंने स्टीव जॉब्स को सुनो, इन्होंने ना फॉन्ट के ऊपर कोई लेक्चर में बैठ गए थे। मैंने कहा ऐसा क्या होता है फॉन्ट के अंदर, व्हाई इज दिस सो डिफरेंट, क्या होता है, क्यों बैठे थे। ही जस्ट सेड, मेरे पास टाइम था तो मैं बैठ गया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। आई डिडंट नो हर फॉन्ट का एक मीनिंग होता है, एक इम्पैक्ट होता है, बट दैट एक्चुअली हेल्प मी। कैसे लोगो डिजाइन होता है, ये सब कोई हम आता तो नहीं है ना, रेगुलरली आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज से यू विल गेट ट्रिगर्ड बाय इट, राइट। तो वो हुआ माय व्हाट, राइट। व्हेन इज द नेक्स्ट, व्हेन डू आई लॉन्च इट, शुड आई डू इट नाउ, शुड आई डू इट टुमारो, शुड आई जस्ट स्टार्ट। क्या स्टार्ट कर देना चाहिए ऐसी रैंडमली? डू यू थिंक? सो मेनी हेड्स नॉडिंग, yes, you should start immediately. Because अगर आपने आज शुरू नहीं किया, you will take forever to start. क्योंकि आप प्लानिंग में आ जाते हो फिर कि मैं उस दिन, शायद उस दिन वो होगा। लॉन्च की बात नहीं कर रही हूँ, टू स्टार्ट। यू ऑलरेडी स्टार्टेड, अगर आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग अ डेप्थ नॉलेज अबाउट इट, यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड। बट टू लॉन्च इज द राइट टाइम कि हाँ वो प्लान्ड होता है। आपके पास एक प्रॉपर एमवीपी होना चाहिए, प्रॉपर एक वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस हो सकती है, एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, राइट। एंड एक छोटा सा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉलेज टाइम में, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम कि जो काम बड़ा चलता रहता था, बट आई यूज्ड टू हेल्प पीपल अ लॉट। तो मेरे पास आ जाते थे, यार मेरा ना वो वाले का वो बाकी है, कैन यू डू दिस ड्राइंग फॉर मी, कैन यू डू दैट फॉर मी। मैं कहा हाँ, आई विल डू इट फॉर यू ओनली फॉर मनी, बिकॉज आई हैव टैलेंट, आई हैव टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग माई सेल्फ एंड आई विल टेक सम मनी। आई यूज्ड टू स्टार्ट, आई स्टार्टेड बाय ओनली 500 रुपीज के ड्रॉइंग्स एंड ऑल। पूरा प्रोजेक्ट कर देती थी उनके, पूरे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े टेबल साइज के मैं मॉडल्स बनाती थी उनके। आई यूज्ड टू चार्ज देम, उससे उसकी वैल्यू भी रहती थी और वो फेंकते नहीं थे उसको, और मुझे भी मजा आता था। अदरवाइज क्या हो जाता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। बट दैट गेव मी द इंसाइट ऑफ अ सेलर एंड अ बायर। नेगोशिएशन सीखने को मिला, क्योंकि वो बोले अरे नहीं यार मैम 5000 रुपीज मांग रहे हो, अरे थर्मोकॉल ही तो चिपकाना है। मैंने कहा अच्छा, तुम बिना खिड़की के ले लोगे बिल्डिंग? नहीं 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 मैम ऐसे मत करो। मैंने कहा तो फिर दो। I was one of them, जो पूरी क्लास में से we were 75 people, I was only we were only 15 जो पास हुए थे। एक हमारा
स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होता है, दैट्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथ्स एंड ऑल. तो उसके अंदर आई पास्ड. I had 15 people whom I was teaching before the next exam, right? So the fees was, एक घर से दूध लाएगा, एक घर से चीनी लाएगा, एक घर से चाय पत्ती लाएगा, एक घर से कप आएंगे, एक घर से तू बनाएगा. Why? They have invested, right? And they all passed. क्योंकि they invested, they studied with me and they passed. So the approach to things will change when you think when. I saw ठीक है आगे का है, आज से शुरू करूंगी, बहुत टाइम लगेगा, but I should start. That time International Year of Millet was not there. I started saying ठीक है मैं I'll start from regrowing it. Let's see कि पहले बेस को ठीक करती हूँ. वहां से फार्मर्स के पास गई, उन्होंने सबने मना कर दिया. I was like oh my god, तो फार्मर काम ही नहीं करना चाहते मेरे लिए. मैं इतने ज्यादा देखते हैं ये लोग कि 5,000 फार्मर, 1 लाख फार्मर, ये कैसे नंबर बन जाते हैं. Then again what, then again when, then started the base of it. कुछ फार्मर्स ने बोला चलो हम ग्रो कर देंगे 1 बीघा. नेगोशिएशन काम आई, राइट? फाउंडेशंस को ढूंढा जो अच्छे काम करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाया कि आप देखो अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, मगर आप मेरे साथ जुड़ के और ऐसे से करो, देखो मेरे पास ये है एंड आई हैव दिस पैशन, आप चिंता मत करो, आई विल डू इट. वहां से शुरू हुआ. देन कोरोना हिट एंड इमेजिन द होल वर्ल्ड स्टॉप्ड. बट किसान तो खेती कर रहा था ना, किसान की खेती तो ना बंद हुई थी. सो दे कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ दिस. दे सेड, मैंने कहा सर देखो आप 2-3 लोगों को और ले लो, फार्मर्स लोगों को मनाओ कि 5-6 और आ जाएं, 10-15 आ जाएं. वो 10-15 के 100 हो गए, सबने 2-2 बीघा दे दिए. इट बिकेम अ बिग मोमेंट. नाउ दे केम टू मी, मैम उग गए अब क्या करें. मैंने कहा ओ हाँ ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है. सो इट वाज नॉट प्लान्ड. आई डिडंट नो इतने लोग जुड़ने लग जाएंगे. सो नथिंग इज प्लान्ड, बट देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी. एंड दैट प्लान बी वाज दैट आई वाज वेरी इंट्रिग्ड कि हाँ मुझे मालूम है ये ग्रो होगा तो इसकी प्रोसेसिंग ऐसे होती है. इस प्रोसेसिंग की मैंने प्लानिंग और स्टडीज पहले ही कर ली थी. कौन मशीनरी बना रहा है कौन नहीं बना रहा, दैट आई हैड विजन कि आगे जाके ना यही करना होगा. तो वो विजन जो है दैट गॉट मी कि हाँ ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम आ गई, आई हैव अ प्लान बी. अब बात करती हूँ किस किस से कर सकती हूँ. नाउ द फंड्स, सब बोलते हैं ना हाउ डू यू डू इट, दैट्स योर थर्ड पॉइंट, हाउ. तो हाउ में आई गॉट इनटू सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन. मैम सर यहाँ पे बैठे हैं, सबसे जाके मिली इंडिविजुअली. उस टाइम कोरोना चल रहा था तो आई कुडंट पर्सनली गो एंड विजिट अ लॉट ऑफ स्पेसेस, बट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑनलाइन कौन मिल सकता है, कैसे मिल सकता है. जो मेरे मेंटोर्स थे उनका सब सर खा गई. मैंने कहा सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. आई डिडंट वांटेड एनीबडी एल्स टू इन्वेस्ट अ लॉट इन मी दैट टाइम, क्योंकि मेरे पास वायबल प्रोडक्ट नहीं है, राइट? जो आप बोल रहे हो ना रिटर्न आता है, उस टाइम रिटर्नेबिलिटी नहीं होता. जब ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं आपको रिटर्नेबिलिटी का सारी वॉलेटाइल होता है. इट्स वेरी वल्नरेबल, आपको नहीं पता इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी. मैंने कहा नहीं मेरे को तो मशीनरी चाहिए, यहाँ आसपास के जितने हैं मैं ही बनाऊंगी, इसके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट. लोगों की चक्की भी तो चलती है, बहुत छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं. देन चाय वाला केम अप. यार काम बस करो. बीइंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे डैड कहते बस करो, सोचो मत, टाइम बहुत कम है. सो वो कहीं ना कहीं पीछे रहा और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया. देन आई टुक लोन, मशीनरी लोन, प्लांट एंड मशीनरी जो आप बात कर रहे थे. एंड इट्स नॉट इजी टू टेक लोन. हाँ, इट्स नॉट इजी टू टेक लोन. यू हैव टू हैव दैट विगर. वो सामने वाले ना देखते हैं तुम कर भी पाओगे नहीं, फेल हो गया, बंद करो ताला और घर पे बैठ गए, मना कर देंगे. बहुत टाइम, बहुत विगर. आपको अपने इनोवेटिव आइडिया कैसे बेचोगे, कहाँ बेचोगे, कौन आपका कस्टमर है, कौन मिला नहीं मिला, कैसे ढूंढा उस कस्टमर को, वो भी मैटर करेगा, राइट? अभी वो सर बोल रहे थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के टेंडर्स भरते कैसे हैं किसी को नहीं मालूम. तुम्हें मालूम है सब कुछ करने से पहले डीपीआर बनाना होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
किसी को नहीं आता, कोई नहीं सिखाता, बट सीखना पड़ता है। उसके अंदर एक एक चीज कि आप 3 महीने बाद 5 लेबर रखोगे, उनकी सैलरी इतनी होगी, वो तक उसके अंदर जाती है। इतनी डिटेल में आपको सोचना पड़ता है। दैट्स व्हेन यू गेट क्लैरिटी। जो करोड़ का जो आता है ना, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसके अंदर निकल के आता है कि 1 महीने 3 महीने बाद, मतलब 3 इयर्स बाद मैं इतना टारगेट कर लूंगा, तो उसके लिए महीने में, दिन में मुझे कितनी सेल करनी है। और तब आपको लगता है ओह, दिन में 30,000 की सेल करनी है, ये तो बहुत बड़ा है। अभी तो मेरे से 2 प्रोडक्ट भी नहीं कोई खरीद रहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। दैट्स व्हेन यू गेट ट्रिगर्ड कि और क्या कर सकते हैं। फिर आप प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हो, आप क्या नहीं ढूंढते, किससे बात नहीं करते। आप बोलते हो अरे सर आपकी दुकान है, आप मेरा भी सामान रख लो। अरे वो इलेक्ट्रिकल है मेरी दुकान, कोई बात नहीं सर रख लो, इलेक्ट्रिसिटी वाले पकाएंगे तो यही सही है। इलेक्ट्रिसिटी वाले सर डायबिटीज, सर आपको पता नहीं है आजकल मिट्टी के बर्तन कितने चल रहे हैं, आपको वो भी रखने चाहिए। बोला अरे मेरा काम नहीं है ये। मैं कहा सर रख लो, 2 दिन मेरे को खड़े तो होने दो। आपको खुद खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आपको कस्टमर नहीं पता। अब आपने ये पता चल गया मेरे पास प्रोडक्ट है, मशीनरी आ गई, सब हो गया, खरीदेगा कौन? हु इज योर नेक्स्ट पॉइंट, हु इज योर कस्टमर। और कस्टमर टारगेट ना मेरे को 3 साल बाद समझ में आया है, एग्जैक्ट कस्टमर कौन है मेरा। लोग लिख देते हैं यूएसपी लिखो अपनी। क्या होता है यूएसपी? अरे मतलब पता है मुझे, कैसे होगा बताओ। द मैन कंपनी तुम्हें मालूम है? द मैन कंपनी जिसके मेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसकी क्या यूएसपी है? क्या है? नाइकी के शूज पहने तुमने, 50 साल बाद तुम्हें समझ में आई है उसकी यूएसपी क्या है। सो यूएसपी ढूंढना आसान नहीं होता। योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज समथिंग दैट टेक्स टाइम, और आप बिल्ड होते होते उस चीज पे पहुंचते हो। यहां तक माइंडसेट बहुत मैटर करता है। यू विल हैव स्ट्रगल्स ऑफ द लेबर, मशीनरी खराब हो गई, यू डोंट नो, मैकेनिक तो नहीं हो ना आप, और ना ही आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, भैया आ जाओ इसमें नट नहीं खुल रहा, यू डोंट हैव दिस भैया, राइट? सो वो कहां से ढूंढोगे? ओवर द इयर्स, ओवर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर बाद मुझे एक पैनल ठीक करने वाला बंदा मिला हु वाज एन एक्सपर्ट। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको मालूम है, राइट? आप लिंक्डइन पे अच्छा सा प्रोफाइल बना लो, आप एंटरप्रेन्योर का वो डाल दो, यू विल सी कि आपको कितने सारे एंटरप्रेन्योर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको अप्रोच करेंगी। बट आर दे वैल्यूएबल? वो आपको एक्सेस करना भी तो आना चाहिए कि ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। उससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, नहीं तो पूरा वर्ल्ड इज गोइंग टू बी लाइक इसको आता नहीं है। अरे मैम इंस्टा पे वीडियो डाल देंगे, वो तो मेरे सुपरवाइजर जो है ना वो भी डाल देगी। ये डिफरेंस है। एक नॉलेज का पावर जो है ना वो करके आता है। यू विल हैव टू हैव दो स्लीपलेस नाइट्स जहां पे विदाउट एनी रीजन आई वाज मास्टर क्लास, किसी को यहाँ मालूम है? एक मास्टर क्लास करके, या मास्टर क्लास करके देयर इज एन ऐप, ठीक है, जिसके अंदर टॉप नॉच वाले जितने भी लीडर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, इवन एसबीआई रॉ एजेंट्स पुराने जो हैं, इवन अमेरिकन एजेंट्स वगैरह जो हैं, दे सीबीआई ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, दे हैव देयर ओन टीचिंग स्किल्स ओवर देयर कि मैंने कैसे किया, नेगोशिएशन कैसे किया, एक क्रिमिनल के साथ कैसे किया। आई इवन सॉ दैट, बट दैट वर्कड, दैट रियली वर्क्स when you are actually in a meeting, ठीक है, I'll give you one trick, ठीक है, सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट, पर्सनैलिटी में पता नहीं चलता, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट, आपको वो एकदम डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज यूर अ फीमेल एज वेल, राइट? आपको नॉलेज नहीं होगी, उम्र कम है आपकी, इसको क्या आता होगा, राइट? तो वहां जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो,
आपको एज अ पर्सन लोग पसंद करते हैं पहले, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं. लास्ट टाइम जब मैं आई थी, who all actually had pastas, millet के पास्ता, millet का बहुत कुछ था, right? इतने लोग थे. How many of you actually bought again or told about this? Ooh, very nice. But bringing that to a normal diet, it took me time to get to you, right? To wait for that time. What, why, how, when are your answers? इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब बनाओ and just start writing. किसी को सारा ब्लेकली मालूम है यहाँ पे? Sarah Blakely is one of the leading entrepreneurs in America. She makes intimate आपके wear बनाती है for women. She's very innovative. She did 0 investment in marketing. Do you know why? She didn't have to. उसने अपना product कुछ लोगों को sample पे दिया. उन लोगों ने इतने अच्छे reviews दिए, they started buying. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ word of mouth से people started making videos. This is so incredible. It's a problem solver. मुझे इतनी दिक्कत होती थी, ये होता था. She didn't tell anybody to make it. That was a product innovation. You know how she actually did it? This is in her master class. She said, मैं almost 8 years तक job कर रही थी. And this actually I used. 8 years तक मैं job कर रही थी. I have an idea. यार ये देखो ये problem है. Let's say ये mic है. ये बार बार गिर जाता है. Why don't I add this hinge to it? तो मैंने ना वो लिख लिया. Then I went, यार चप्पल जूते टूट जाते हैं लोगों के. Why don't I make interchangeable चप्पल जूते? उसने वो लिख लिया. This is an idea. बोलते ना दया दरवाजा तोड़ो. ये तोड़ने से पहले कुछ और आइडिया हो सकता है क्या? यार ऐसे हो सकता है. लिख लिया. It doesn't have to turn true. But you keep telling your mind कि आप कर रहे हो. Be innovative. Try. करते रहो. Do you know Velcro? सब यूज करते हैं यहाँ पे. उस बंदे ने क्या प्रोडक्ट बनाया था? उसके बाल में फंस गई थी चीजें. He said, यार ऐसे घुंघराले बाल वाला ना कुछ प्लास्टिक का होना चाहिए जिसके ऊपर चीजें चिपक जाएं. फिर उसने प्लास्टिक ढूंढी. फिर उसने ये किया. उसने वो चीज, वो छोटा सा आइडिया आज पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है. So it does not have to have कि आज ही चेंज आ जाएगा, आज ही सब हो जाएगा. No, it will take time. But sharp your mind. लिखते रहो. कुछ भी आइडिया आता है, it doesn't have to be told to anybody. किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं. But be open to accepting कि हाँ आप आइडियाज जनरेट कर रहे हो. Write them out. उसमें से जब when you see ना, you'll see one idea which will, यार मैं इसको multiple times लिख चुकी हूँ. And I think this is the future. That's how you find your idea. Okay, but that will take time. If you have it, very good. If you don't have it, don't stress. But be sure कि हाँ ये idea है. It has a future. Talk to people and be open about it. Okay, no shy. Entrepreneurs are not shy. I am not shy. I am open to all your questions. Seek help. People will help you. If you ask the right questions, you'll get the right answers. And that's where I stop myself. Thank you. Thank you so much for reciting your success story. It's truly inspirational for all of us. Before winding up, an important announcement for all the students. Feedback link has been shared in your WhatsApp group. It is mandatory to fill that feedback link to get the certificate. Now, I invite the co-convener of today's program, Mr. Jatinder Kumar, to give vote of thanks. Very good afternoon, all of you. It's an indeed a privilege and a matter of great honor to stand before you today to express our heartful gratitude on behalf of Deshbandhu College for your valuable contribution and active participation in the Entrepreneurship Awareness Program
that we organize in collaboration with MSME. So first and foremost, I would like to express our deep appreciation to our beloved principal, Professor Kamal Kumar Gupta, for his unwavering support and for his constant encouragement and bringing this wonderful initiative to life. Your guidance and wisdom have been instrumental in making this event a success. We also extend our heartfelt gratitude to Srimati Shakti Rani, the program coordinator, who has put in tireless efforts to ensure that every aspect of this program was meticulously planned and executed. Your dedication has been truly inspiring, ma'am. Our IQAC coordinator, Dr. Aditya Saxena, played a crucial role in ensuring the quality and standards of the program, and we extend our sincere thanks for our commitment to excellence. Our heartfelt thanks goes to our esteemed invited speaker, Dr. K.K. Goyal, Shri Gaurav K. Agrawal, Shri Chetan Sharma, Ms. Subhangi Singh, and your insights, our expertise in the field of entrepreneurship have enriched the knowledge of our participants and left a lasting impact. Dr. Sandhya, the convener, Ms. Sonam Tomar, me as a co-convener, worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of the program. And for that, we are extremely thankful. IT team, under the supervision of Dr. Monica Bajaj, make sure that our event was well connected and accessible to all. Our dedicated caretaker, Mr. Prempal, ensured that all logistical arrangements were in place. We also want to acknowledge the hard work and dedication of our student volunteers who selflessly gave their time and energy to make the event successful. Last but not the least, we extend our gratitude to all the participants who joined us today. Your active involvement and enthusiasm were the driving force behind the success of this event. Your eagerness to learn and engage with the topic of entrepreneurship was truly inspiring. So in conclusion, I would like to express my sincere thanks to each and every one of you. It is our collective efforts, dedication, and commitment that have made this day a resounding success. Okay, so your contributions have not only benefited the participants, but have also contributed to the growth of entrepreneurship awareness in our country. Let us continue to work together and collaborate on such meaningful events, fostering the spirit of entrepreneurship, innovation, and knowledge. Thank you. Have a wonderful day. Students, please fill the feedback link. The link has been shared by Sandhya ma'am on the WhatsApp group.